Hey guys, today we have Deepak Pareek in the house. ये एक बहुत ही फेमस कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम श्योर कि आपने इनके वीडियो कभी ना कभी इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हुए जरूर देखे हुए होंगे। मोर देन 1,50,000 के ऊपर फॉलोअर्स है थ्रू आउट सोशल मीडिया। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, ही इज अ की नोट स्पीकर। बहुत जगह में उन्होंने स्पीकिंग की है और बहुत बढ़िया की है। आज हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, उनके पूरे लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में, और हम लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो वेलकम दीपक। Thank you so much, Pratika. Thank you for having me. Pleasure to be here. Would you like to briefly tell our audience कि आप what do you do? Uh, good question to start off with. So as you already rightly introduced me, I am a creator. I create content. I'm an entrepreneur. I run a media production firm. It's called Iceberg Creations, where we do ad shoots, corporate films, video production for a bunch of brands. And apart from that, I am a keynote speaker. I visit colleges. Whoever invite me to colleges, I go to colleges, have some fun with the students there, give some gyan, get in there. That's about me. That's something I do. So tell me how did content creation started? Like I have heard a bit about you, like you were really into CA कि CA करना है and BCom with CA करने वाला था and then you shifted. How did that shift happen? So primarily, I was again both of us being from Calcutta, and I was from the commerce background. So essentially, the shift happened in a way that I was preparing for my BCom and I was doing my CA prep together along with BCom. And ये हुआ कि I did not want to do CA primarily because I was in it for the wrong reasons. I entered because I thought I saw other people doing it in college, and I thought that चलो बाकी सब कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं और उससे हो जाएगा. But I was in it for the wrong reason, and I was sort of you know misguided, so to say. When I thought कि ठीक है कर लेते हैं, no problem, क्या ही है. Only to realize a couple of attempts later that this is not something I essentially want to do for the rest of my life. I want to do something else. I want to do uh, clear नहीं था करना क्या है, बस ये पता था कि ये नहीं करना है. So what I mean, what I shouldn't do was clear. What I want to do was not clear. Is still not clear, by the way. Okay. कि करना क्या है नहीं करना है, but at least then I was like, so from CA to content shift happened pretty interestingly. I've shared this before, and I don't mind sharing it again. So what happened is I was preparing for my last attempt. I was like, ये लास्ट अटेम्प्ट देंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. उसके बाद तो भैया अब बुक्स बंद होगा, सीए से क्विट करेंगे फाइनली. एंड आई लॉक्ड माई सेल्फ इन अ रूम एंड आई वाज लाइक, नहीं भैया अब तो बंद कर रहे हैं, अब पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. But because CA students tend to take online classes and learn from YouTube videos as well, I had a laptop and I had an internet connection and I knew youtube.com. So I went on youtube.com, and the biggest drug out of all the drugs that we will consume is the YouTube recommended section. Yeah. So I started consuming YouTube content, and then I figured कि so first video I saw was how to become a YouTuber, and I was like, oh great, fantastic. And that time मैं content consume करता था. I used to consume like a lot of content. I used to watch popular YouTube, and उस समय content वाला word था भी नहीं यार. मतलब to be very honest, that time what was prevalent was the word YouTuber. उस समय मेरे को content और creation और social media influencer ये सब these words were Latin to me. मेरे को पता भी नहीं था ये सब क्या है. So I used to watch Prajakta. I used to watch Nikunj, Bionik. I used to watch Nikhil. I used to watch a bunch of other YouTubers, and I was like, यार ये interesting लग रहा है. ये life बड़ी interesting लग रही है. Although I am of the opposite opinion now that I have become a creator. I was like, ये life interesting एकदम भी नहीं है, बस बाहर से interesting लगता है, अंदर से एकदम भी interesting नहीं है. So yeah, I mean that's how I thought कि यार एक shot देते हैं. Let's give one last shot and देखते हैं. Let's see where this goes. Gave one last shot. Obviously, मैं जब घर में लॉक था तो लोगों घर वालों को लग रहा था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, but मैं YouTube videos देख रहा था, and to their disappointment or whatever you may call it,
I was preparing to become a YouTuber more than a CA. And so I think that's how it all began. That's how the journey began. And overall, I think that was probably the last time I had given my CA exam. और उसके बाद और मैं दो तीन मार्क्स से रह जा रहा था यार, मतलब when I was not, and that time I was like बस हो गया, अब नहीं होगा, because clearly there's something wrong. If every attempt I'm missing by 2-3 marks, then there's clearly something wrong with the checking or with the system. And I didn't want to be a part of such a system where I am working hard, but I think because of the system's fault, I was not being able to clear the exams. So either there's a huge margin where I've not studied and it's clear कि हाँ 15 20 50 मार्क्स से तुम रह गए, then it's a different issue. बट मेरा जब 15-20 मार्क्स से ही रह जा रहा है, और मेरा जब 2-3 मार्क्स से ही रह जा रहा है, which clearly means that something wrong with the system, right? I mean, इतना बार बार तो नहीं हो सकता. So I thought कि ठीक है यार, let's try content, and content शुरू हुआ. That's how it all began. कूल कूल. सो लाइक अभी भी अगर लोगों के साथ ऐसा होता है, लाइक सब तो टॉपर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल. most of the population are average students only. हाँ जी. So, when they are taking a course like engineering कर रहे हैं या CSCS whatever they are doing, at what stage do you think they should think कि अभी you should try doing something else, क्योंकि once you get into job kind of a thing, तब उतना टाइम मिलेगा नहीं to explore different fields. So when should a person take that decision कि हाँ अभी सही टाइम है, कुछ और explore कर लेते हैं? यार कृतिका, देखो ऐसा है ना कि right time is very subjective. Matlab, a lot of people ask us, as, or rather ask me in my DMs or send me emails that, Deepak, you took the plunge from CA to content and then content to entrepreneurship and a bunch of other things. When did you feel is the right time to sort of take that plunge and take that leap of faith? And I still answer, even I don't know how that shift happened. It just happened over the course. Now that I look back, I can touch upon that those data points कि हाँ मेरे को पता है 2018 में ये हुआ, 2022 में ये हुआ, 2017 में ये हुआ, right? So I think वो आपको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा बहुत कि चलो साथ साथ में स्टार्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, दो चीज साथ में स्टार्ट कर दिया. One thing will pick up over another, and then that you can continue doing that, prioritize that over something that's not working out, and then keep on doing that for the rest of your life. And I think timing को लेके I have a very clear philosophy that never quit is bullshit advice. I think you should really quit a lot of things, क्योंकि उसी से बहुत कुछ fruitful निकल के आता है. Even if it's say a toxic friendship or a toxic relationship, I mean it could be anything, and I'm not just saying relationship in terms of a romantic relationship. It could be a relationship between a parent and a child. It could be a relationship between friends. It could be any relation, right? But say you are a host and I'm the guest here, so this is also a relationship, right? So any relationship, if it's toxic enough, I think you should quit, or maybe quit that toxic company if you feel that work culture is toxic, or that manager is becoming toxic, or anything, right? So make sure that you quit at the right time, and right time will be subjective, right? I cannot tell you that okay, this is the right time for you, take that call and quit. No, you have to take that leap of faith. You have to take that chance that हाँ ठीक है, चलो अब मेरे को लग रहा है कि चलो ठीक है, अब ये सही टाइम है, अब निकलते हैं यहाँ से. So even now, till now, the kind of things I've quit in terms of professionally or academically, CA कब quit किया मेरे को याद भी नहीं है. वो छूट गया बस. Like during COVID, when everybody was stuck at home, this is 2019 end, right? And that was the time I was 18 end में I was applying for my masters in the UK, and I thought कि masters apply करते निकल जाते UK, एक साल पढ़ के आते आराम से, उसके बाद देखते. Now had I gone to the UK, I might not have started with content. And I'm so grateful I did not leave for the UK in 2018, because had I left then, I would not have discovered content. I would not have taken that plunge into content creation. So things happen for a reason, yaar. Matlab, I just sort of look back and now realize that, okay, thank God things happened and things always align. I mean, the best part and the most beautiful part about time is that it heals everything. And Absolutely. it takes a while, but it heals everything. So I think there's no right time as such. I think now is as good a time as any to start something that you were planning to start.
So yeah, I mean, it's very subjective for people, but just take that plunge and start. You'll figure out later. या आई टोटली अग्री। दीपक, अभी ऐसा बोला जा रहा है, लाइक बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं कि जो हसल कल्चर है उसको बहुत रोमांटिसाइज किया जा रहा है, हाँ दैट जी। यू शुड गेट आउट फ्रॉम ऑफिस से आने के बाद में तुम्हारे पास 3 घंटा है, उस टाइम हाँ जी। काम करो, कुछ बन के दिखाओ, ये वो। सो ऑल्दो इसके बहुत सपोर्टर्स भी हैं जो अग्री करते हैं, बट बहुत ज्यादा इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सो यार कृतिका, मतलब सीन क्या हो रहा है ना कि एक तो यू करेक्टली पॉइंटेड आउट दैट इट्स बीइंग वेरी ओवरली रोमांटिसाइज्ड एंड ग्लोरिफाइड कि हाँ नहीं, तुम अगर 24 घंटे में से 26 घंटे अगर काम नहीं करोगे तो तुम मतलब तुम क्या ही कर रहे हो जीवन में, है ना। सो आई थिंक टू ईच इज ओन यार, मतलब लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है। एक तो हम एज सोशल बीइंग्स क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं और हम्म। सबकी एडवाइस ले लेते हैं, and that is not something that's going to be fruitful for anybody in the long run, right? You again, I have another philosophy that I strongly believe in is be careful who you take advice from, right? हम्म। क्योंकि ज्ञान ना बहुत है, especially in this digital era where we are on social media, where we have Instagram, LinkedIn, Twitter, and a bunch of other apps that are there. Gyan abundant, information is abundant, right? Data is abundant. We need to be careful who we take advice from. There are a lot of, so to say, quote unquote, gurus on the internet who will give a lot of gyan. Um, Now creators are giving gyan. Again, I being in that same sphere, and I या don't, and I'm not, and so to say, you're सेम, also a या creator, right? So, या। and we all give that gyan and then information, and that is not, there's nothing negative about it, right? We're in the same sphere giving information and spreading knowledge, but we need to understand that we're also consumers, right? And we need to understand that if I am giving gyan or information about entrepreneurship and I have not cracked entrepreneurship, then हम्म। what is my credibility? मैं किस credibility के हिसाब से ज्ञान दे रहा हूँ? Like what's the basis on which I am giving that knowledge? If I am saying that, okay, here are 5 tips to improve that you should follow if you want to improve at public speaking. But I have not cracked public speaking myself. I am myself am afraid of that stage and I don't know how to focus on content and delivery and body language and audience interaction, a bunch of other things. Why are you listening to me? What have I done? क्यों सुन रहे हो भाई मेरे को, मैंने क्या किया? If Pritika talks about productivity and she herself uh, is not productive enough and does not know time management and Pomodoro technique, why would I listen to you? What have you done? एंड Similarly, आई थिंक ऑडियंस इज क्वाइट स्मार्ट। धीरे धीरे उनको भी समझ में आ जाते हैं कि ये सिर्फ कहीं से छाप रहे, पढ़ के छाप दे रहे हैं या बोल दे रहे हैं। हाँ दे यार, डोंट। मतलब या। ऑडियंस, मेरे को पता है प्रीतिका क्या होता है ना, ऑडियंस हमेशा से स्मार्ट थी। हम्म। ऑडियंस ना हमेशा से स्मार्ट थी। कोविड कोविड ऑनवर्ड्स पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन सोशल, हम्म। सो वो ध्यान ज्यादा देने लग गई है, right? And a lot of we've seen that shift from consumer to creator also, where हम्म। we've seen that a lot of consumers who were initially just consumers of content have started creating content also. तो या। वो लोग अब, क्योंकि कोविड था, पैंडेमिक चल रहा था, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो सब घर पे बैठे बैठे ही बोर हो रहे थे, सबने कुछ ना कुछ शुरू कर दिया, विच इज अ ग्रेट आइडिया बाय द वे, राइट? स्किल बिल्डिंग के हिसाब से फैंटास्टिक है, राइट? एंड आई डोंट नो अबाउट यू, बट आई स्टार्टेड क्रिएटिंग इन 2018 when reels was not there, when IGTV was a thing, right? So I used to create and I've been creating back then, since back then, right? तो अभी क्या हो गया, ऑडियंस अभी भी स्मार्ट है, it's just that people have started spending some more time on social. तो हम्म। अब वो नोटिस ज्यादा चीजें कर रही है कि अरे यार अच्छा, दीपक ये कंटेंट बना रहा है, अच्छा कृतिका ये कंटेंट बनाती है, अच्छा मे बी अंकुर वारिको ये कंटेंट बनाता है, मे बी कोई कोई और ये कंटेंट बनाता है, राइट? सो पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन सोशल एंड देन दे रियलाइज कि ओ ये तो बस फेक कर रहा है, इसने खुद ने कुछ उखाड़ा नहीं है, ये बस ही इज जस्ट फेकिंग इट, like हम्म। for no reason at all. So people, and it becomes a very easy catch for people, it's not very difficult. हम्म। So yeah, I mean, glorif to answer your question, I think हम बहुत ऐसे digress कर गए.
But to answer your question about side or just hustling, Yeah. be very careful of who you take advice from. सबकी बात Hmm. सुनने की जरूरत नहीं है यार. तुम जब तक you are happy with your 9 to 5 or your side hustle or your business or whatever you're doing, as long as you are happy with whatever you're doing, you don't need to care about what the world thinks of you. And it's easier said than done. A lot of Yeah. people will say when they watch this podcast also कि अरे ये तो बहुत ऐसे क्लीशे बात कर रहा है. नहीं यार, क्लीशे बात कर रहा हूँ because it works. Cliche is The cliche for truth. a reason, right? Yeah. Yeah. It works. So I think you have to understand where we are coming from. कि सबकी बात सुनने की जरूरत नहीं है. Hmm. तुम उसकी बात सुनो जिसने जिसने खुद ने कुछ क्रैक किया है, and then maybe implement it in your life and see your changes. Otherwise, भैया तुम अपने हिसाब से ठीक हो. Hmm. अगर कंटेंट बना रहे हो तो कंटेंट बनाओ, अगर जॉब करे तो जॉब करो, अगर धंधा करे तो धंधा करो, जो कर रहे हो करो, as long as you are happy, to each their own. That's great. Okay. How did you get into public speaking? Because I have read it in your uh, blog or somewhere that you were an introvert. yeah, absolutely. So how public speaking is like, even I am an introvert, and हाँ when जी. somebody I meet in person, and I don't really talk that much when I don't know that person that well, and they're हाँ like, वीडियोस में इतना कैसे बोल लेती हूँ, वहां पे तो इतना बोल हाँ. लेती हूँ, और अभी सामने एकदम चुप, मतलब उनको लगता है कि आई एम लाइक एक्टिंग और समथिंग, बट इट्स नॉट. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. Right. तो यार मतलब so it started again. All of this started in school. ठीक है. Hmm. My entire schooling, my college, everything has been from Calcutta itself. I was in Don Bosco School, Park Circus, for people who are not from Calcutta, just out of context. From an all boys convent school. So अब स्कूल में था तो स्कूल में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे there are MUNs happening, there are debates happening, there are extempore competitions happening, there are fests happening where you have the opportunity to host the event and a bunch of other things happening, right? तो अब आप स्कूल में, and for the audience who is watching, I'm assuming there are young audience who are watching this. So अब अगर आप लोग स्कूल में या कॉलेज में होंगे तो आपको पता होगा कि आप रियलाइज करोगे दैट एवरी इवेंट में, हर एक इवेंट में, whether it's a speaking event or any event, there are always the same set of people who are participating in every event. Yeah. अब अगर डिबेट है तो वही चार लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वो एक बंदा आता है बाहर से कि there's a debate competition happening, can you give names, और वही चार बंदे, yes ma'am, yes sir, I would Yes. want to participate. There are no new names ever, Yeah. Yeah. right? And for the longest time, till about the 10th standard, I'd never spoken on stage. I'd never even stepped on stage. Even if I had stepped on stage, it was for a group act or a group theater or a group competition. Never stepped on stage as a solo participant or a solo speaker, right? So I used to, till about class 10, I used to watch a lot of people. मैं ऑडियंस में बैठ के देख रहा हूँ कि हाँ यार ये कर रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. इसमें क्या डिफिकल्ट है, ये तो ज्यादा कुछ, दिस नॉट रॉकेट साइंस, कोई हाथी घोड़ा नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ, तो Yeah. करते हैं. सो वन फाइन रैंडम डे आई थॉट कि ठीक है चलो यार अब स्टार्ट करते हैं, ये हो गया बहुत ड्रामा, लेट्स स्टार्ट यू नो स्टार्ट विद द पब्लिक स्पीकिंग फियर. अब फियर लेट गो करना है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मजाक उड़ेगा तो उड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, और इरिस्पेक्टिव मजाक तो लोग उड़ाते हैं, उनका काम ही वही है. तो मैं बोला ठीक है करते हैं. सो क्लास 11 में आई वॉकड अप टू माय teacher and I told her, ma'am, there's this event happening, patriotic song competition हो रहा था, and I told ma'am that ma'am, I want to host the event. She asked me one question. She said, तुमने पहले कभी होस्ट किया है कि नहीं किया है? मैंने कहा नहीं किया है मैम, बट आई वुड लव टू गिव इट अ शॉट, क्योंकि मेरे को अपना फियर हटाना है. तो आप अगर गैम्बल लेने के लिए रेडी हो, then I would love to, let go of that fear and start my public speaking journey. She said ठीक है चलो let's see, देखते हैं. We started rehearsing and practicing, and ये स्क्रिप्ट था और मैं स्टेज पे चढ़ गया. And when you're rehearsing तो ऑडियंस नहीं है ना, खाली ऑडियंस है, आप बस स्टेज पे खड़ा होकर रिहर्स कर रहे हो, ऑडियंस नहीं है. तो मैं रिहर्स कर रहा हूँ, रिहर्सल ठीक जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है. जब अब आया इवेंट का बारी. अब इवेंट में सब पूरा का पूरा ऑडियंस भरा हुआ है, पूरा का पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, ठीक है, फ्रंट रो पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर इंचार्ज सब बैठे हैं, और मेरी फट रही है, और मैं सोच रहा हूँ यार मैंने तो खाली ऑडियंस में प्रिपेयर किया था,
और हाँ। यहाँ पे इतने सारे लोग, 1000-1500 बच्चे, पूरा स्कूल बैठा था, राइट। सो 1000-1500 बच्चे बैठे हैं और मैं खड़ा हूँ माइक लेके डायस पे, और मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग। और ये गुड मॉर्निंग बोलने में मेरे को मतलब कम से कम 10-15 रीटेक लग गया। और मेरी टीचर मेरे एकदम एकदम ऐसे एडजेसेंट खड़ी है और मेरे को ज्ञान दे रही है, बोल रही है, तू क्या कर रहे हो भैया, थोड़ा जल्दी करो, फटाफट करो पूरा। यू रिमेम्बर द सीन वेयर, आई थिंक गोलमाल का सीन है, जहाँ पे वो बोलता है "अरे जल्दी कर, पनवेल हाँ। निकलना है"। तो वही मैं, आई थिंक द टीचर गेव मी दैट रिएक्शन कि जल्दी कर भाई, पनवेल निकलना है, हाँ। क्या कर रही है, क्या कर रहा है। सो I sort of like introduced everybody, then came off stage, and luckily मेरे साथ एक और host था, so we were two of us. So I think event obviously was a flop, it was a no brainer, मैंने तो पूरा mess up कर दिया था। हम्म। And मैं झाड़ भी सुना मैम से obviously कि यार तुमने event mess up कर दिया, ये वो। But I think she said one thing which has stayed with me till now, which is I'm glad you tried, हम्म। and I'm glad you failed, because henceforth your public speaking journey begins. Which is an advice that has stayed with me till now. So हम्म। even now that I go to, irrespective of how big or small, firstly stage कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, every stage is a stage, ठीक है। दूसरा दूसरा आई थिंक a lot of people feel that इसने यहाँ बोला है, वहां बोला है, ये बहुत कॉन्फिडेंट होगा, ठीक है, certain sense of confidence है, but then before every talk you have those jitters कि अरे यार ऑडियंस क्रैक करना है, ये ऑडियंस के साथ ये क्रैक करना है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट, और रादर द बेस्ट एंड द स्कैरिएस्ट पार्ट अबाउट पब्लिक स्पीकिंग इज दैट एवरी ऑडियंस इज डिफरेंट। हम्म। हर जनता डिफरेंट है, हर ऑडियंस डिफरेंट है। इवन इफ यू आर एड्रेसिंग अ कॉलेज, अ कॉलेज ग्रुप, एवरी ऑडियंस इज डिफरेंट। कोई कॉमर्स के बच्चे हैं, कोई साइंस के बच्चे हैं, कोई आर्ट्स के बच्चे हैं, कोई ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई मास्टर्स का स्टूडेंट है। अब फर्स्ट सेकंड ईयर में भी डिफरेंस है ना, कोई कोई टीयर 2 से है तो वो ऐसे एक तरह से बिहेव करेगा, कोई टीयर 1 से है तो वो इस तरह से बिहेव करेगा। आई हैव हैड इंस्टेंसेस वेयर पीपल हैव स्लेप्ट इन फ्रंट ऑफ, ओके। फ्रंट रो, और वो पसर के सो रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसे आंख बंद करके ऐसे सो रहा है, वो पसर गया धीरे धीरे धीरे। मैं बोला अबे उठ, क्या कर रहा है भाई, इतना बोरिंग लग रहा है क्या तेरे को, क्या सो क्यों रहा है भाई। सो आई थिंक तो अगर अगर ऐसा होता है कि यू आर सीइंग कि पीपल आर फाइंडिंग इट बोरिंग, सो डू यू चेंज द होल स्पीच और डू यू मेक एनी ऑल्टरेशंस ऑन द So गो? I don't have any speech prepared. Never. मतलब I used to have a, so initially ना सबसे बड़ी गलती मैंने क्या की थी, मैं रट के आता था स्पीच। हम्म। कि और ये स्कूल में होता था कि मैंने अगर अब ये जो मैं फर्स्ट पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपटीशन का मैंने बात किया, ये क्लास 11 की बात है, हम्म। राइट। क्लास 12 में आई वाज मेड टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कंपटीशन, एंड दिस आई डिड नॉट पार्टिसिपेट बाय चॉइस, दिस आई पार्टिसिपेट बाय चांस। और इसमें भी मैं, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं था, एंड आई वाज हम्म। लाइक यार, स्क्रिप्ट मेरे को दिया गया है, एक बंदा डिड नॉट टर्न अप at school because he was sick, but he sent across a speech, and this person comes up to me during the break time and he's like, भाई स्पीच रेडी है और जाके बस पढ़ दे। बोला व्हाट डू यू मीन जाके पढ़ दे, डिबेट कंपटीशन है ब्रो, आई डोंट इवन नो व्हाट द टॉपिक इज, आई डोंट इवन नो whether I'm for or against the motion, मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है, what am I going to speak about। he's like टेंशन मत ले, स्पीच रेडी है, बस जाके पढ़ दे। हम्म। लाइक भाई तू फंसाने वाला काम कर रहा है, एक बार मेरा धजिया उड़ चुका है स्कूल में, मैं मत उड़वाया वापस। बट चलो ठीक है, कर देते हैं जो भी। So the biggest mistake I used to make initially was I used to memorize my speech, हम्म। which I realized is not something that public speakers should do. Then I started preparing a presentation. अब presentation में मैं I started writing long paragraphs, which defeats the entire essence of the presentation, because presentation का मतलब क्या है कि तुम pointers लिखोगे पॉइंटर्स और लिखोगे। उसके हिसाब से ज्ञान दोगे। मैंने पूरा स्क्रिप्ट ही प्रेजेंटेशन में डाल दिया कि नहीं भैया आप ये प्रेजेंटेशन पीछे रहेगा, आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग आउट। हाँ। दैट्स द सेकंड मिस्टेक। देन आई स्टार्टेड उसको भी कंसाइज करके फिर पॉइंटर्स आने लग गया। हम्म। नाउ आई डोंट इवन कीप पॉइंटर्स, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि द टॉपिक इज वेरी क्लियर। अगर कॉलेज बुला रही है कोई या फिर कोई इंस्टीट्यूट बुला रहा है तो वो खुद ही पूछ लेते हैं कि आप किस पे बात करना चाहोगे। सो आई टेल देम दैट आई टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनल ब्रांडिंग और
content creation or a bunch of other things, whatever they want me to. तो अब ये सब टॉपिक्स मैं ना कवर कर चुका हूँ बहुत पहले, बहुत बहुत सारे इवेंट्स में. सो कहीं ना कहीं आई हैव दैट जिस्ट कि हाँ मेरे को ये कवर करना है. Coming to instances where people maybe sleep off or Getting mic bored. getting bored Yeah. or mic बंद हो गया, लाइट Hmm. चली गई, लोड शेडिंग हो गया. um, I I just take a pause, Hmm. right? And that pause is a very important element in public speaking. A, Hmm. it helps the audience grasp what I'm trying to say. B, it tells them or it makes them think, like the pause I took just now. So it will make the viewers think that, oh, अरे ये इसने कुछ बोला है, let's Hmm. just grasp this information. तो तो अब मैं क्या करता हूँ? So now I've started integrating a lot of humor into the conversation. So now it's not a very hierarchical thing where I am on the stage and they are नीचे, तो it's a ऊपर नीचे वाला हिसाब किताब. In fact, I don't even get up on stage nowadays. I just go on stage for 2 minutes when the introduction happens, and then I take the mic and then I come down. So Okay. I'm at the same level, right? And I walk down in the entire stage. So I go एकदम पीछे तक, because I know कि एकदम पीछे वाले लोग WhatsApp यूज कर रहे हैं, Instagram चला रहे हैं, right? एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मैं एकदम पीछे तक चला जाता हूँ कि तो हाँ भैया अटेंशन बताओ मिलना क्या ही चल है रहा है. फिर. तो अटेंशन मिल जाता है, प्लस इट मेक्स इट वेरी रिलेटेबल. और Yeah. ऐसा लगता है कि हम में से कोई बंदा आया बात करने के लिए. So it's Hmm. always like a group discussion, as if मैं लोगों से बात करवा रहा हूँ, लोगों से मस्ती कर रहा हूँ, लोगों का मजाक उड़ा रहा हूँ. And then in turn, what happens is at the end of the talk, people end up making fun of me, which Hmm. is the best validation a speaker could ever get, because the speaker has made the audience so comfortable that the audience now is comfortable in making fun of the speaker, which is fantastic for a speaker. So now I just have a gala time with the audience. So I have fun, I make fun of them. मैं मजाक उड़ा देता हूँ, मैं कुछ ऐसा जोक मार दूंगा. 2-3 टेम्पलेट है मेरे जोक के, वो रहते ही है. इंट्रो में रहता है एक दो आउट्रो में रहता है, सो वो मैं मार देता हूँ. तो वो Hmm. and you have to realize that speaking na is an art, right? Hmm. A lot of people have realized that even my fellow speakers, they've not been able to establish that connect with the audience because वो speech prepare करके आ गए. They don't know कि audience कैसी है, bored है कि पहले से सुन रही है कि तुम पहले speaker हो. ये भी बहुत जरूरी है लोगों को देखना. So I see if I'm the first speaker, then the audience is pretty charged up. So I don't have to charge them up. But if Hmm. I'm a speaker towards the end, then they've already heard like 5-6 speakers. और अब ज्ञान सुन सुन के लोग बोर हो चुके हैं. अब उनको मस्ती चाहिए. So now you have more of fun than the gyan part. Hmm. So try and integrate as much humor as possible, because that in itself is very interesting for the audience to grasp कि हाँ यार बंदा आया मस्ती करके चला गया. Because लोग बात करते हैं, Hmm. right? जैसे ही आप ऑफ स्टेज जाओगे, लोग बोलेंगे अरे यार दीपक क्या है यार, बेकार बोल करके चला गया, राइट? बट एट द सेम टाइम अगर आप मजाक करके जाओगे या मस्ती करके जाओगे, इफ यू लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन, लोग बोलेंगे अरे यार दीपक यार, आउट ऑफ ऑल द स्पीकर्स आई थिंक दीपक वाला में मजा आया. Hmm. ज्ञान मिला नहीं मिला, दैट्स सेकेंडरी. It's always important how you make the other person feel. So that feeling is very important. And लोग बोलते क्या अरे यार मजा आया. And when people say मजा आया, that's the best validation I think I look for. Nice. So yeah. So if somebody is starting out and उनको भी अगर public speaker बनना है, हाँ जी. and like स्कूल से शुरू कर दो, कॉलेज से शुरू कर दो, ताकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, दैट्स अ गुड एडवाइस. बट लाइक टू रीच द वाइडर ऑडियंस, और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, लोग आपको इतना जानते भी नहीं हो, फॉर देम स्पेशली हाउ व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप्स? So when I started, I was not a creator. I was in school, right? You could start, and a lot of people start in school. If they don't start in school, if they realize later on, they start in college. If they realize much later, they start giving presentations in, say, their professional courses. If you're doing CA, CFA, CS, or if you're in college, you're doing BCom, BMS, BB, whatever you're doing, there are presentations, right? You have some college presentation happening, some event happening. If you're doing a job, then you have those corporate presentations happening. So you at least have some exposure in terms of speaking, right? So you start somewhere at least,
राइट। जरूरी नहीं है क्रिएटर बनना। इनफैक्ट क्रिएटर क्रिएटर का पब्लिक स्पीकिंग से कोई लेना रिलेशन देना भी नहीं नहीं है। है, राइट। कोई लेना देना नहीं है। राइट। आई नो अ लॉट ऑफ स्पीकर, लॉट ऑफ क्रिएटर्स हु आर नॉट स्पीकर्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि उनका काम नहीं है द वर्क। उनका काम है क्रिएशन, क्रिएट करना, वो क्रिएट कर रहे हैं और वो मचा रहे हैं। राइट। वेरी सिंपली पुट, सबको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट। इट्स ओनली व्हेन यू, इफ यू वांट टू, यू कैन एंड यू कैन। सो माय एडवाइस अगेन, everybody is learning public speaking and everybody is growing, but I think I come from a place where I've done a lot of things, so I can, I'm in a position to say this. Start as early as possible. अगर स्कूल में हो तो शुरू कर दो, क्लास 8 9 10 11, जिस भी क्लास में हो शुरू कर दो। डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट। अगर आपको लगेगा कि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग मजाक उड़ाएंगे, तो मैं कह देता हूँ कि लोग मजाक उड़ाएंगे। हम्म। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोगों का काम है मजाक उड़ाना। तुम ध्यान मत दो, तुम करते रहो। और लोग 2 दिन के लिए मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद किसी को सब फर्क लोग। नहीं पड़ता। It's called the spotlight effect, where you think you are important. You या। think that the spotlight is on you, but it's not. Right? तो तुम इतना ध्यान मत दो, तुम इतना तवज्जो अपने आप को मत दो, तुम इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं। सबसे हम्म। पहली बात तो ये। So start as early as possible. If you did not start or couldn't start in school, and if you're in college right now, participate in as many events as possible. Here, learning is important, participating is important, winning is not. Even if you come third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, whatever, it is okay. What's more important right now is to learn a bunch of things right now, because you're young, you're 18 19 20 years old. और 18 19 20 साल में कोई तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम सब कुछ कर लो और सब कुछ तुम्हें आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज अराउंड सर्कमस्टांसेस, योर एनवायरमेंट, योर सराउंडिंग्स, राइट। तो अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज में पार्टिसिपेट करो, डिबेट्स होंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे, ऑर्गेनाइज इवेंट्स, राइट। बहुत सारे कॉलेजेस टेड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, ऑर्गेनाइज अ टेड इन योर कॉलेज। बहुत कुछ सीखोगे यार, कैसे रीच आउट करना है लोगों को, टेड का लाइसेंस कैसे प्रोक्योर करना है वो सीख जाओगे, स्पीकर्स को कैसे बुलाना है वो रीच आउट वो सीख जाओगे, टीम कैसे बनानी है वो सीख जाओगे, पोस्टर्स कैसे बनाने सीख जाओगे। अगर तुम एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, से यू आर द प्रेसिडेंट और द चेयरमैन और व्हाटएवर, यू विल बी एबल टू डेलीगेट वर्क कि हाँ यार इसको डिजाइनिंग आता है, इसको पकड़ के डिजाइनिंग करवाते हैं, इसको मे बी मार्केटिंग आता है, इससे मार्केटिंग करवाते हैं, इसको वीडियो एडिटिंग आता है, इससे सारा वीडियो एडिट करवाते हैं, राइट। इसको आउटरीच आता है, इससे आउटरीच करवाते हैं। So you will learn a lot even when you don't participate, but even if you organize events, you will learn a lot of things just by organizing that one event. And that is important, right? If you are in college, join societies, join clubs, right? Maybe dramatics, maybe theater, maybe sports, maybe the commerce society of your club, maybe the entrepreneurship cell of your club. Join societies. Because what will happen is, हर सोसाइटी एक इवेंट होते रहता है, होते रहता है, राइट। सो यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दीज इवेंट्स, ए टू अंडरस्टैंड कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा हम्म। है, बी अगेन वन ऑफ माय कोर फिलोसफीज इज मोर लर्निंग हैपेंस आउटसाइड कॉलेज देन इनसाइड इट, या। राइट। तो वो ज्यादा जरूरी है कि तुम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करते रहो। तो स्टार्ट करने के टिप्स यही है कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। इफ यू नॉट स्टार्टेड देन स्टार्ट राइट नाउ, irrespective of wherever you are. If you're in school, start. If you're in college, start. If you are in office, start. और जरूरी नहीं है, तुम बहुत लोग बोलते हैं कि तुम ये ज्वाइन कर लो, ये क्लब वो क्लब, ये टोस्ट मास्टर्स, ये वो है पोस्ट ना देना। मास्टर एंड ऑल, या। तुमको करना है करो, तुमको नहीं करना है तुम फिर भी कर सकते हो, राइट। आई हम्म। एम नॉट अगेंस्ट एनी ज्वाइनिंग और नॉट ज्वाइनिंग, तुमको जो करना है करो, बट माई पॉइंट इज उसके बिना भी कर जरूरी नहीं सकते है। हो। हम्म। हाँ हाँ, और ऑफ कोर्स मैंने नहीं किया है, बहुत लोग नहीं करते। सो इट राइट। कम्स फ्रॉम, तुम जितना भैया ठोकर खा के सीखोगे ना, उतना तुम किसी क्लब से नहीं सीख सकते। तो आई दैट इज, एग्री। तो वही है यार, वही दीज आर कपल ऑफ टिप्स। स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, and don't stop after a couple of failures. Don't stop, because you will fail. पहला इवेंट बेकार जाएगा ही जाएगा, पहला प्रेजेंटेशन बेकार होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा, ये तो लिखित में ले लो फिर से, ये तो फॉर श्योर होना ही होना है। बट करते रहो, लगे रहो। Okay, once the person thinks they're ready for it, should they be sending cold emails or like keep trying कि मेरे को बुलाओ, or like how does it happen? How will people know that you speak so well? Like Of you are doing course. it to college right now. बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा? So if you want to become a, एक तो ऐसा है कि you need to be a subject matter expert also.
हम्म। राइट? आपको लोग क्यों बुलाएंगे? अगर एक्सपर्टी आपने होगा। अगर अगर आपने किसी चीज में फोड़ा नहीं है तो आपको नहीं बुलाएंगे लोग, राइट? हम्म। वेदर इट इज एंटरप्रेन्योरशिप और पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट और व्हाटएवर दैट इज, कोई भी स्पीकिंग के लिए अगर कोई बुला रहे है, तो मैं तो तुमने या। कुछ ना कुछ तो किया होगा ना लाइफ में, तुमने फोड़ा होगा। इफ यू आर इन कॉलेज एंड यू क्रैक्ड अ बंच ऑफ थिंग्स, शो योर वर्क, right? हम्म। I am reading this interesting book. It's called Show Your Work योर by वर्क या। Austin Kleon. Show your work. It's very important to, otherwise लोगों को नहीं पता चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो. हम्म। Till the time you show what you do, people will not get to know. या। शाहरुख खान अगर मूवी नहीं करता तो पता नहीं चलता किसी को कि शाहरुख खान एक्टर है, right? So you have to show your work, you have to publish it, and you have to go out there and tell people. Most of my initial speaking gigs are gigs where I have reached out to the audience, where I've reached out to the organizations, to the colleges, to a lot of institutions कि यार मेरे को बुलाओ, I'm a speaker. हम्म। So I used to send them cold emails. I used to send them cold messages कि यार मेरे को बुला लो, I'm a speaker. I just need 10 minutes of your time. उससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए, बस मेरे को 10 मिनट चाहिए. 10 मिनट मेरे को दे देना, फ्री में आऊंगा, मेरे को पैसे भी मत देना. I will just come 10 minutes में बोलूंगा और निकल जाओ. हम्म। तो उसका एक फोटोग्राफ होगा, उसका एक वीडियो होगा, वो फोटोग्राफ डालो अपने सोशल पे, हम्म। राइट? अपने लिंक्डइन पे डालो, शेयर करो कि दिस इज वेयर आई वाज इनवाइटेड एंड दिस इज व्हाट आई स्पोक अबाउट. Then I after a while I started documenting every talk I was giving. So I हम्म। started recording every talk. I started recording every journey. So from home, जब से मैं घर से निकल रहा हूँ, till हम्म। the time I've reached that venue, till the time I've given that talk, हम्म। and till I've come back home, I've recorded every single thing. So it's like a vlog that I've done, where I've recorded every single thing and I've put those videos up online for people to see कि हाँ यार ये वीडियो, चलो इसने आज मे बी आईआईटी में बात किया, इसने आज आईआईएम में बात किया, इसने आज ये कॉलेज में बात किया, वो कॉलेज में बात किया, ये लोकल इवेंट में गया तो ये इसने यहाँ बात किया, राइट? पीपल नीड टू नो दैट यू आर अ स्पीकर. राइट इट इन योर बायो दैट यू आर अ कीनोट स्पीकर. हम्म। विदाउट दैट पीपल वुड नॉट नो. भाई कैसे पता चलेगा लोगों को? आज मैं लिखता हूँ कि आई एम अ टेडेक्स स्पीकर और अ जोश टॉक स्पीकर और अ कीनोट स्पीकर, तो लोगों को पता है. आज मैं वीडियो शेयर करता हूँ दैट व्हाइल आई एम स्पीकिंग, तो लोगों को पता है दैट आई एम अ स्पीकर. कैसे पता होगा? नहीं तो यार, आज कृतिका 5 बिजनेस कर रही होगी, हाउ वुड आई नो? I would not know until unless you tell me, or हम्म। until unless I see it somewhere on your social that okay, Kritika is doing this. नहीं पता ना मेरे को यार, I don't know. So until unless people see it, until unless people have that notion कि हाँ यार चलो ये कृतिका ये करती है, दीपक ये करता है, तब तक पता ही नहीं चलेगा लोगों को. तो you need to show your work and initially आपको reach out करना ही पड़ेगा, और कोई शर्म की बात नहीं है, हमने सबने किया है. ठीक है, तो करो, reach out करो. You will have to tell people what you're doing, otherwise पता कैसे चलेगा लोगों को? या। एंड यू आर योर ओन चीयर लीडर. तो एकदम बेशरम होके रीच आउट करो भैया, बोलो कि आई एम अ स्पीकर एंड आई वुड लव टू डू अ गिग एट योर कॉलेज व्हाटएवर. या। एंड रिजेक्शन आएगा, जस्ट टू लाइक कंक्लूड, रिजेक्शन आएगा बट लगे रहो. ग्रेट ग्रेट एडवाइस की लगे रहो, दिस इज लाइक द बेस्ट एडवाइस या किसी या को मिल सकता लाइक है। लगे रहो। ओके। दीपक, आप ये बताओ कि नेक्स्ट वीक आप क्या कर रहे हो, लाइक व्हाट इज करेंटली अभी एग्जैक्टली एक हफ्ते में आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज कीपिंग यू बिजी? okay. So next week, I'm in Mumbai only. So I put up in Mumbai, so I'm in Mumbai only. I'm not traveling. I have the regular content coming up, so we're shooting that content. I have a bunch of podcast episodes that are into shoot. So we have a lot of podcast episodes lined up for the entire week. And I have a couple of shoots that we are shooting with a couple of brands that's also lined up. So professionally, that's keeping me busy. बाकी तो सैटरडे को मैच देखने जाएंगे. मुंबई वर्सेस राजस्थान का मैच है, तो विल गो फॉर मैच. नाइस नाइस। सो या आपने जो तीन चीजें बताया, पहले कंटेंट शूट का बात किया था, सो डू यू लाइक हैव अ प्लान कि मैं इस तरह से लाइक डू यू बैच एंड शूट, और डू यू लाइक जैसे ही या दिमाग में तुरंत उसी टाइम शूट कर लो? So most of it is by shoot. I try to so again मेरा content को लेके ना बड़ा sort of से SOP बनाया हुआ है, which हम्म। is standard operating procedure. तो मेरा वो बनाया हुआ है. So SOP ये है कि एक तो as
creators, we're also consumers. So we also keep scrolling. We also see कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. So we get ideas. So as and when I get ideas, I put it on my self WhatsApp group in which I'm the only member. So I put it on the WhatsApp group. And then when I'm sitting to script, वो बस एक draft idea है कि हाँ ये idea है. Then I sit to research. We have a team also. So we sit for the research. We sit कि चलो भैया ये टॉपिक मिल गया, अब इसको रिसर्च करते हैं इसके ऊपर. उसके बाद रिसर्च होती है. जब 5 6 7 8 टॉपिक रेडी हो जाता है, एक दिन बैठते हैं, एक दिन पूरा का सारा कंटेंट एक दिन में शूट होता है. We send it to our team who edits it. We get receive the videos, and then we have an upload schedule where we have say, and I usually upload every alternate day. So I know that okay, this is something that I need to do. In terms of video content, तो video content को लेके तो ये है कि shoot करना है, edit करवाना है, ये करना है, वो करना है. Text content is as and go, as and when. मतलब it's on the go. It's not कि मैंने plan किया आज मेरे को ये डालना है, आज मेरे को वो डालना है. Now text content could be Twitter I take it on the fly. मतलब जब मन किया डाल दिया, जब मन किया नहीं डाला. LinkedIn is again, if I feel I need to share a story, I do. If I feel कि यार बहुत time हो गया है, कुछ दिन पे डाला ही नहीं है, let's share something, so I share something. I used to be very active on LinkedIn, but I realized that it doesn't work for me. So try and create maybe twice or thrice a week. I think that's good enough frequency for me. But yeah, in terms of videos, I do batch shoot. Okay, nice. So I'm guessing that you also have a team to look after certain aspects of the video creation or content creation, or Anju. is it all you? No, we have a team. We do have a team. Okay. Is there any particular thing you look while hiring कि इस चीज का मैं ध्यान रखता हूँ कि ये चीजें टिक मार्क होनी चाहिए, then I'll work with them. Again, hiring, मतलब जब मैंने start किया था अपना venture Perekida when I was in college, when I was 19 years old, उस समय मेरे को लगा कि hiring difficult है. Till the point I started firing people, and I realized that oh shit, firing is much more difficult than hiring. Hiring तो फिर भी ठीक है, but firing is much more difficult, right? So how do you tell somebody कि तुम कल से ऑफिस मत आओ? It's a very tedious task, right? And so in terms of hiring, I think the vision needs to match, right? You should not you should treat, say if you're working with Deepak, you should treat that my content is your content, as if कि मैं content, as if अगर मैं if I'm a hire for Pritika, I should feel that I am creating content for Pritika and I am creating for myself. मेरे को उस फायर और उस ambition के साथ अगर मैं नहीं काम करूंगा तो फिर it always looks like as if I'm working for you, I'm not working with you, right? So you need to work with the person and not work for the person. As long till the time you're working for the person, you'll always have that that hierarchy कि हाँ यार ये काम करने बोला गया, ये कर दिया, हो गया खत्म. But if you're working with the person, you can tell the person, give that person feedback कि ओ यार सुन ये गलत कर रहा है तो मत कर. And my team gives me feedback कि भाई क्या कर रहा है, पागल है क्या, ये मत कर, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है. So in terms of hiring, I think the vision needs to match. People need to be visionaries in terms of the thought. For example, I am seeing content in this way. Somebody might see it in a very myopic vision where उनको पता है कि यार मैं हो सकता है 5 साल सोच रहा हूँ, वो हो सकता है नेक्स्ट 50 साल सोच रहे हैं, जहाँ पे ई बुक लॉन्च हो जाएगा, कोर्स लॉन्च हो जाएगा, वर्कशॉप्स ऑटोमेट हो जाएगा, मर्ज लॉन्च हो जाएगा, आई माइट डू मूवीज, कंटेंट बिकम्स ऑटो पायलट हो जाएगा, कंटेंट बिकम्स एन ऑटो पायलट. आई डोंट नो, राइट? सो आई थिंक you need to work with people more than for people. I think that's when vision alignment comes into picture. That's when I feel that a lot of, in fact, a lot of hires have happened where they are much more ambitious than I am. They have told me कि यार दीपक ये करवाओ. They send me references. If I'm hiring an editor, they send me references कि दीपक ऐसे try करते हैं. And initially when I started off with my content team, I realized that जो edit करता था ना मेरे videos पहले,
he used to tell me कि यार दीपक ये वीडियो में echo है बहुत. So he used हम्म. to send me the video, and उस समय I didn't know उस ये mic और ये headphones हाँ, अभी आए हैं. ये जो fancy जो उतना अभी लग रहा टेक्निकल है. आइडिया नहीं था. That's what I'm saying, that ये सब या अभी आया है. पहले पता ही नहीं था ये सब माइक होता है. And these are expensive things, right? And या I'm not boasting, I'm just saying that in every आई business you एग्री. invest, या. right? This is our business, we invest in the business, right? It's very simple. So, and initially कुछ नहीं था. Initially बस एक फोन था. ये हम्म. फोन था, फोन से बस रिकॉर्ड किया और इसी का ऑडियो में वीडियो चला गया. हाँ And I'm हाँ. like, भैया ये तो नहीं चलेगा, ये तो बहुत एको आ रहा है, बहुत बाहर का मिक्सर चल रहा है, वही वो आवाज आ रही है, पीछे से मम्मी बुला रही है, अरे बेटा क्या कर रहे हो, तो वो सब आवाज आ रहा है. हम्म. So all of these things have started happening. The person used to send me the video telling me that Deepak ये आवाज ये प्लीज इसमें बैकग्राउंड नॉइज बहुत है, एको बहुत है, एक हम्म. काम कर, मैं तेरे को वीडियो भेज रहा हूँ, तो अलग से ऑडियो डब करके मेरे को ऑडियो भेज, आई विल सिंक द ऑडियो विद द वीडियो सो दैट द वीडियो लुक्स वेरी पॉलिश्ड. Now, हम्म. had he not said that, had he just minded his own business, कि हाँ भैया मेरे को तो मेरा काम तो एडिट है, मैं बस एडिट करके छोड़ दूँ, my videos would have been shitty, right? So, हाँ. I'm just saying that you need जो to. एक्टिव पार्टिसिपेशन दे आपके साथ में. Yeah. So they told me, even in fact they tell me till date कि भैया हम्म. तुम क्या कर रहे हो, ये मत करो, ये तो बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए. So या. even if it's a designer, they tell me कि यार चलो भैया ये ठीक है, वो ठीक है. Even in terms of, say, if I'm hiring a content writer, I would see हम्म. their previous work. I would see how the person is reaching out, हम्म. right? How the person is speaking while, then there's no, like ये सब चीजों में ना ज्यादा कुछ ऐसे stringent interviews टाइप नहीं होता है. At least content केस में इतना कुछ interviews नहीं होता है. You just see the portfolio, you just figure out कि भैया, you just make a, like, have a call कि यार you want to work for a long term basis, अपने को ऐसे short term पे नहीं करना है, long term काम करना है, नहीं तो नहीं करेंगे काम, पहले ही बता दो भाई. हम्म. So if they're in it, then fantastic. So I think vision alignment is one thing that, where do you see us going together, and where do you see our content going together, and how can we level up together? So हम्म. यही चीज है. If that happens, then I'm more than happy to work with the person. टेल मी, इज अर्निंग मनी डिफिकल्ट? क्या लगता है आपको? आज के डेट में हमारे पास इतना सारा ऑप्शंस है, इतने सारे हाँ. स्किल सीखने के लिए. एंड जब हम लोग सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, इट्स नॉट लाइक अब कोई बहाना भी नहीं है कि मैं रिमोट एरिया में रहता हूँ या मेरे यहाँ पे ये नहीं है, मेरे यहाँ पे वो नहीं है. आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो. हाँ जी. आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ऑल्दो देर आर ऑलवेज लिमिटेशंस फॉर एवरीथिंग, बट आई हम्म. डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट जो पहले हालत था. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? That's an interesting question, yeah. I've never answered this question before. Is earning money difficult? Yeah, so I agree with you where you say that it's there are so many options available right now. और आज के जमाने में भी अगर आप होके सो रहे हो तो गलती आपकी है और किसी की गलती नहीं है, right? And I completely, I mean, I'm with you on that. But बहुत बार क्या होता है, again, हालात is not right, circumstances are not right. A lot of people, if even if they are very good at what they want to do in terms of a skill, say if somebody is a great footballer, or somebody is a great, say, mimicry artist, or a great actor, or a, whatever that is, right? In terms of skill, they won't be able to pursue it full time until and unless the financial side of thing is sorted, right? Because I'm talking about the creative side of things for now. हम्म. ये सब चीजों में ना टाइम लगता है हम्म. क्रैक करने में. हम्म. Secondly, and a lot of, like, most people who study, whether they're in school or in college, most people are average, या. right? या. Right? Most people are average. या. A minority of the population is extremely poor in academics, which is a fact. I'm not putting down anybody. It's a fact, right? Most of them are not good at academics. Like most of them, like a minority of the population are not good in academics. A minority of the population are fantastic and excel in academics. They're like the toppers in the top 1% of the entire class. But the remaining 80%, so to speak, are average students between, say,
55 to 75 Yeah. percent लाने वाले लोग, right? Even I was in that category only. Same, right? So I used to Yeah. always hover around 60, 65, Yeah. 68, Yeah. 63, right? I was Mm-hmm. not even reaching 75 up. I was not even going below 60. मतलब I was in that 60 to 75 वाले range में always. Yeah. Yeah. And I Yeah. was like, ठीक है यार, मतलब not wrong. Nothing is wrong. So I think making money is not difficult considering you put your emphasis on skill building. अगर आप Mm. खाली बैठे रहोगे, everything will seem difficult. Yeah. And again, another thesis of mine is it's only easy when you've tried it, Mm. right? मतलब दूर से सब चीज डिफिकल्ट ही लगता है. मतलब दूर से लगता है कि हाँ यार पॉडकास्टिंग क्या है यार, देखते हैं, कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा. Mm. It's only when you've done it for a considerable amount of time when it's then you realize कि वो यार ये इतना भी difficult नहीं था. Like Mm. it was just so difficult in my head. Like Mm. when you say the cover drive that Virat Kohli plays, it's perfect, right? But when he started, it was not perfect. It It was was not. difficult, Yeah. right? So it's called the 10,000 hour rule, where you practice anything for 10,000 hours to just remain perfect, Mm. right? And always work on your strength. You Mm. don't need to work on your weakness. No, that's a farce. You need to work on your strength. अगर एक strength है, उसी को करते रहो. Perfection lies in practicing that one thing over and over and over again. Mm. आपको वही सेम बोरिंग खाना खाना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी. आप सेम वो ऐसे आइसक्रीम वॉफल्स खाते रहोगे तो आपका वो बॉडी नहीं बनेगा, राइट? आपको सेम वो ज्ञान, मतलब इफ यू आर अ क्रिएटर, then you will always have to keep facing the camera over and over and over again. AI भले ही आ जाए, can't Mm. replace me talking on the camera, right? Of course. Yeah. Right? So money making is difficult for sure. Mm. जितना आसान लगता है दूर से उतना आसान है नहीं. पता नहीं है. Somebody might making a lakh rupees a month, somebody might making 10,000 rupees a month, somebody might be making 1 CR a month, depending on their skill set, right? And I always believe that good work stands out. If I talk about your favorite cricketer, who's your favorite cricketer? Virat Kohli. Virat Kohli. Who's your Yeah. favorite actor? Ritik. Any, Yeah. right? Yeah. So Ritik, for example, right? Mm. So why are they favorite for you? It's because you found their work fascinating, Yeah. and the work that they have done has stood out for you. Mm. So good work will always stand out no matter what. If you're Right. average, then you will not be discovered. Right. So you need to always focus on upskilling yourself. You always need to focus on कि हाँ यार ये this is my level playing field. मेरे को यही field में खेलना है. Mm. So if content is my field, media is my field, I need to know every goddamn thing in this field Mm. so that I become invincible. So money making, to come to your point again, money making is difficult, but learning that skill that will make you that money is not difficult. Mm. You got to put in that effort. You got to put in those hours to learn that skill, and that skill will make you money. Again, I want to reiterate: the degree will not make you money. The skill will make you money. We are moving towards an era where we're moving towards the gig economy, or rather, we are in the gig economy, where we know that a lot of work will be freelance work, Mm. right? We're moving towards an economy where skill is given much more emphasis than the degree. I don't care whatever you've done, as long as अब content writing सिखाया नहीं जाता, Right. content creation सिखाया नहीं जाता है, वो एक skill है जो अब सीख गए लोग, right? Video editing, most of the people I have met, whether it's a DOP on set who's shooting from the camera, or somebody who's doing photography or videography, or he's skating, roller skates कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, everybody is self-taught. Mm. So YouTube is a free university that people need to tap on. It's a free university. Why don't people learn from YouTube is my question. In fact, most of my team members have learned from YouTube. Yeah. 2 हफ्ते They're मैंने
हाँ, दो सॉरी हफ्ते कैरी ऑन। पहले हाँ, मैंने 2 हफ्ते पहले मैंने रूबिक क्यूब सॉल्व करना सीखा है यूट्यूब से ही। एग्जैक्टली सो इट्स फैंटास्टिक राइट। या मतलब इट्स लाइक यू गूगल, यू यूट्यूब एनीथिंग, या and YouTube is not a social platform, it's a search engine. It's a search engine, it's not a social platform. So you need to put in the right keywords in order to get the right results, एंड right? इवन So इफ यू डोंट पुट द राइट कीवर्ड समहाउ रिकमेंडेशन आ जाएगा, द कुछ ना समथिंग कुछ तो आएगा ही ना दैट यार, विल क्लिक कुछ ना फॉर कुछ यू. तो आएगा ही. So if you या want to learn Rubik's Cube, just type out how to solve a Rubik's Cube. You'll find like 1,000 results, yeah, या in like not even a second. हम्म. Sorry. So एग्री. I don't think, I mean, I think learning a skill हम्म. is in your control, completely in your control. And if you learn that skill and perfect that skill, I don't think money making is difficult. बट मतलब वो eventually आ जाता है यार लोगों या बट दीपक, बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं, में. दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी या फिर नहीं बन पा रहा है. सो डू यू थिंक लक इज अ बिग फैक्टर? यार again, again, fortune favors the brave. So I feel that a lot of it will compound over time, हम्म. right? In fact, when I look back at my journey, I've been हम्म. creating since the last 4.5 years now, या right? या And I started with YouTube, grew to about 3,000 subscribers, and then left YouTube completely. अब छोड़ देंगे तो नहीं बढ़ेगा ना अपने आप, राइट? वन ऑफ वीडियो जो क्लिक हो गया वो बढ़ता रहेगा, बाकी बाकी वीडियो स्टैग्नेंट ही रहेंगे, बिकॉज देयर आर like thousands of videos being uploaded on the same topic every single second. या So how do you plan to sort of reach that level? So I think it's compounding, it's over time you realize that हाँ ये चीज क्लिक हुई है, इस चीज को आगे और करते रहना पड़ेगा. And you will have to keep doing that no matter what. Again, a lot of people will say it's contradictory to what you said earlier, that never quit is bullshit advice, and now you're saying लगे रहो quit मत करो. नहीं यार, मतलब certain things that you also want to keep doing, you do keep doing. Certain things that you don't want to be a part of, you will quit. I did not want to be a part of. I did not want to become a CA, so I quit CA. But I wanted to keep doing content even if I was failing, because I wanted to do it. हम्म. Right? Initially, everybody starts with 0 subscribers, 0 followers, zero या views, zero likes. Everything starts from zero, right? या So everybody starts with zero. I also started with zero. I'm no special here. But I think a lot of it, again, future, like as I mentioned, fortune favors the brave. या So you need to keep at it. मतलब वो compound होता ही है over time. You have to realize that अगर अभी नहीं चल रहा है और लगे रहोगे तो कहीं ना कुछ तो क्लिक होगा यार. मतलब 100 बार मारोगे तो कहीं ना कहीं 2 बार तो लगेगा ही लगेगा यार, लगेगा और ही श्योर लगेगा. लग रहा है. मतलब आप 100 मैसेज भेजोगे, एक ना एक बंदा का तो रिप्लाई तो आएगा ही आएगा. 100 ईमेल भेजोगे, एक ना एक बंदा, इवन इफ इट्स अ नो, हम्म. अरे उसने मैसेज पढ़ा तो सही. 99 लोगों ने मैसेज ही नहीं पढ़ा. बड़ा ही नहीं. हम्म. एटलीस्ट एक बंदे ने मैसेज पढ़ के ना बोला, तो दैट इज एटलीस्ट वन रिस्पॉन्स आउट ऑफ 100. या सो एटलीस्ट 1% रिस्पॉन्स रेट है तुम्हारा. तो राइट. तुम उसको ऐड स्केल करो ना. अब तुम 1,000 करो तो 10 लोग तुम्हें रिस्पॉन्ड करेंगे. अब तुम 1,000 जब तुम मैसेज कर दिया है, तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि तुम क्या गलत कर रहे हो, तो तुम ओवर टाइम इंप्रूव भी करोगे अपना मैसेजिंग स्किल्स. तो हम्म. 1,000 से फिर वो रिस्पॉन्स रेट 10 से बढ़ के बढ़ेगा. 50 होगा. दैट कम्स टू 5%. राइट? सो आई थिंक, मतलब अगेन, एज आई मेंशन्ड, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, बट आई थिंक लगे रहना बहुत जरूरी है. आई हम्म. थिंक, आई मीन, लगे रहना उस चीज में जिसमें आपको लगे रहना है. हम्म. ऐसा नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आप ऐसे ही लगे हो कि हाँ ठीक है, किसी के बोलने पे कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा. नहीं यार, ऐसे नहीं होता. मतलब एटलीस्ट इट्स नॉट वर्क फॉर मी. या आई कांट से अबाउट अदर पीपल, बट इट्स या नॉट वर्क फॉर मी. आई रियलाइज दैट मेरे को अगर कंटेंट करना है तो वो कंटेंट करना ही करना है, नो हम्म. मैटर व्हाट. जो हम्म. एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग मेरे को करना है, बाद में देखेंगे कुछ और, अगर कुछ और इंटरेस्ट लगा तो कुछ और कर लेंगे. हम्म. But for the time being, I want to do it because I have fun and I'm हम्म. able to make money out of it. So why not? या Right? So I think, and it compounds over time. या So I was doing for the last 4.5 years. पहला 2 साल कोई ग्रोथ नहीं हुआ. Suddenly reels came in, TikTok got banned, started getting reels, started getting that traction. थोड़ा बहुत बढ़ते गया. And that's when people started realizing. Speaking में भी क्लास 11 से शुरू किया, क्लास 12 में गया, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किया, was not getting a lot of gigs.
आई थिंक सेकेंड ईयर में, और इनफैक्ट आफ्टर कॉलेज आई थिंक आई गॉट अ लॉट ऑफ गिग्स। एक हम्म। इंस्टीट्यूट ने बुलाया, दूसरे इंस्टीट्यूट ने बुलाया, 2019 में पहला टेड हुआ। सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड हैपनिंग ओवर टाइम। वो पहला दिन में नहीं हुआ था, उससे कम से टोटली। कम 4 5 साल 6 साल लगे हैं। स्पीकिंग तो आई एम डूइंग सिंस द लास्ट 8 इयर्स नाउ। तो 2015 से मैंने शुरू किया था, इट्स बीन 8 इयर्स। तो द 2015 से लेके प्रॉब्लम 2000। आई या द प्रॉब्लम आई थिंक इज द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि हम लोग को फटाफट रिजल्ट चाहिए सबको। यार देखो, वो यू कांट हेल्प दैट। या। मतलब इफ यू लाइक यू रियली कांट हेल्प। आई मीन वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ डोपामिन। हम्म। या। And there's a very interesting video by Simon Sinek, who is the author of Start with Why, and he says, um, why do we're living in this world of instant gratification, हम्म। where we send out 10 messages to 10 different people saying hi, 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 हम्म। and we receive a response from two of them and we feel happy. या। So that's instant gratification. Even to say go out to meet people or go out on dates or whatever, people don't take that effort. Now it's just left swipe, right swipe, that's या। it. या। Right? So there's not a lot of effort that people are taking. People just want instant results. कि एक वीडियो डाला और 1 मिलियन व्यूज आ गए, तो भैया नाउ आई एम फेमस। नहीं यार, नहीं होता ऐसा। यू विल टेक टाइम एंड गुड थिंग्स टेक टाइम। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है तो वो अच्छा नहीं है। हम्म। मतलब अगर एक दिन में तुम 100K बढ़ गए तो तुम्हें पता ही नहीं है ना कि तुम्हें फ्लिप साइड ही नहीं पता हाँ। कि तुम्हें कहाँ मेहनत करनी है। हम्म। लाइक नाउ दैट आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 4.5 years, आई नो कि मेरे को क्या नहीं करना है। हम्म। मैंने इतनी सारी गलतियां कर ली अब कि मेरे को अब पता है कि यार हाँ, ये नहीं करना है अब। ये नहीं करना है, क्या करना है वो तो किसी को ही नहीं पता। क्या करना है वो तो फिगर आउट कर ही रहे हैं, बट क्या नहीं करना है वो ओवर द लास्ट 4.5 5 6 years समझ में आ गया कि ये नहीं करना है। So I think a lot of people rely on that instant gratification कि यार ठीक है, एक बार कर लिया हो गया। A lot of people, in fact, most of the young people who are aspiring creators या। reach out to me via DMs कि यार Deepak, I also want to create content. How do I start? How do I start? And they have like 5 videos and they are like, sir, या। I'm not इट्स getting नॉट वर्किंग 10,000 आउट, views, व्हाट टू डू। 20,000 works. It's not working, but I think I should quit. I'm like, भाई तुम क्या पागल हो क्या भाई? हम्म। मतलब एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए भी आपको 6 महीने लगते हैं। या। तो तुम कैसे 5 वीडियो बना के बोल रहे हो कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए? या। मतलब I now have 1,000 videos on the internet to my name, where I on my Instagram I have 1,000 videos. So हम्म। now I have 1,000 videos over the last 5 years translates to about 200 videos a year, and या। 200 videos a year is easily like more than alternate days, राइट। right? So every alternate day comes to about this data, where every alternate day I've put out a video for the last 5 years, right? या। So now I have data speaking for me. I am not speaking. My data speaks for itself, right? So you need to give some time यार। मतलब थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। आप सीए बनने में भी आपको 5 साल लगते हैं ना, एमबीए करने में भी 2 साल लगते हैं ना, धंधा खड़ा करने में आज अगर अंबानी, if he is the richest person in Asia, then it's taken a while. या। To have big goals, it's gonna take time. यस। मतलब आपको आपको एवरेज रहना है तो फिर आप मत पढ़ो। मत नहीं पढ़ने में टाइम नहीं लगता। पढ़ना ही नहीं है तो टाइम किस में लगेगा? तो फिर आप एवरेज रहोगे। सो अगेन, मतलब इट गुड थिंग्स टेक टाइम, सो यू विल टेक टाइम, बट आई हैव थिंक पेशेंस। या सो यू अगेन इट कंपाउंड्स। सो या। यू कीप एट इट, लगे रहो। बट अगेन लगे रहो उस चीज में जो आपको, जिसमें आपको लगे रहना है। एंड नाउ अब मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ तो मेरे को अब फेलियर की आदत हो चुकी है। नाउ हाँ। आई नो दैट ठीक है यार, मतलब इट्स ओके। ये नहीं चला, इसको वापस करते हैं, ठीक करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सो या। राइट। Yeah. Deepak, you do so many things like content creation, podcast, you have a business to run. Yeah, so many things, filmmaking and everything. So, is there anything सॉरी। which like you started at some point and left it in midway, या फिर नहीं काम किया workout and you left and you बहुत सारी चीजें हैं। regret कि शायद मैं उसमें थोड़ी और मेहनत करता तो वो चल जाता, या फिर और करना चाहिए था मुझे? Okay. There's one thing that I have on the top of my head right now. But again, there's no regret because I feel एक चीज जाता है तो दूसरा चीज आ जाता है, सच्ची बात है। या। राइट? और एक क्लीशे है, बट ये हुआ है यार लाइफ में।
So I I just agree. speak from experience, right? Yeah. Um, I so I'm a huge cricket fan. ठीक है, Hmm. मतलब Hmm. मैं जब इनिशियली जब मैंने शुरू किया, आई थिंक व्हेन आई वाज 2 or 3 years old, I started, like, I held a bat in my hand and I started playing. And my cousin brother used to live with me back then. He taught me like spin bowling ki aise kar, aise bat pakad, ye kar, wo kar. And I'm a lefty, right? So I and shuru mein I started like playing lefty, and he didn't stop me because initially क्या होता है, पेरेंट्स रोक देते हैं कि अरे ये लेफ्टी क्यों बन रहे हो, राइट ऐसे खेलो, दिस इज हाँ राइट, हाँ हाँ दिस होता इज द रॉन्ग वे, राइट? बट आई एम सो ग्लैड दे डिडंट स्टॉप मी, दे वर लाइक हाँ ठीक है, मतलब सही है जो है. हाँ. So I used to play cricket. I was in the school cricket team. I was in the college cricket team. I then proceeded to play professionally, second division for Bengal. And then COVID happened. Hmm. So the process is second division, first division, and then Hmm. Ranji Trophy. So I wanted to pursue cricket for the longest time. Like in my head, I imagine myself donning that India jersey, and I'm having goosebumps as I say this. But uh, but ठीक है, it's okay. I mean, COVID happened. It was in nobody's control. And when COVID happened, my content picked up. Hmm. So I can't complain. I have nothing to complain about, Yeah. right? So, but apart from that, I think I've tried so many things in life where I've tried and I've failed. Hmm. For example, CA, right? CA कोशिश किया, पढ़ाई किया, एग्जाम दिया, नहीं क्लियर हुआ, वापस दिया, नहीं क्लियर हुआ, फिर छोड़ दिया. बट सीए, क्योंकि सीए क्रैक नहीं हो रहा था, आई थॉट कुछ और करते हैं. तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीएफए. सीएफए का लेवल 1 दिया, एक सब्जेक्ट में रह गया, वापस दिया, वापस एक सब्जेक्ट में रह गया, आई वाज लाइक चक इट, नहीं करना है. कैट दिया एज अ मीडियम ऑफ एस्केप, Hmm. नॉट बिकॉज आई वांटेड टू डू इट, बट बिकॉज एज अ मीडियम ऑफ एस्केप, कि भाई आप अब यार सीए सीएफए करके परेशान हो चुके हैं, अब हाँ एस्केप के लिए कुछ करते हैं. हाँ. कैट भी ठीक से क्रैक नहीं हुआ, आई वाज लाइक चक इट, कैट नहीं करेंगे. लर्न गिटार बीच में छोड़ दिया, लाइक हाँ ठीक है, मतलब जिसमें पासिंग होता है ना, पासिंग फेज, जैसे रूबिक्स क्यूब फॉर यू कुड बी अ पासिंग फेज. अभी 10 दिन बाद वो बस कोने में पड़ा रहेगा, आ वो बस रहेगा. डस्ट या आ जाएगा उसके ऊपर और वो पड़ा रहेगा, या. राइट? सो गिटार वाज लाइक अ पासिंग फेज, कि हाँ सीखा, मजा आ रहा था उस समय, नहीं मजा आया, छोड़ दिया. और हम्म. बहुत चीजें ना, आप क्योंकि आप यंग होते हो, तो आपको बहुत चीजें ना कूल बनने के लिए करना होता है, हम्म. राइट? कि आप 15 16 17 18 साल के हो और हाँ. बाकी लोग कर रहे हैं, तो बाकी लोग ऐसे गिटार में फोटो डाल रहे हैं, तो हम्म. गिटार मैंने इसलिए शुरू किया था कि बाकी लोग ये कर रहे हैं और बाकी लोग बड़े कूल लग रहे हैं. मैंने देखा स्कूल में गिटार जो रहता है ना, वो बड़ा, उसको सब पूरा अटेंशन मिलता है लाइफ में. तो मैं बोला यार मेरे को भी चाहिए अटेंशन, तो मैं गिटार सीख लूँ. हम्म. गिटार सीखना शुरू किया, बट देन फिर वो, आई फिगर्ड कि नहीं यार, मतलब इट्स अ पासिंग फेज, फिर वो छोड़ दिया. या. क्रिकेट फिर प्रोफेशनली छूट ही गया, हम्म. because COVID happened and all that. Then I left for the UK, did my masters there, came back, then shifted to Bombay. So, matlab, I'm not complaining, no regret whatsoever. But yeah, I mean, I'm an eternally optimistic soul, so I still feel that कहीं ना कहीं क्रिकेट में कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है अभी भी. So I still feel कि हाँ यार, कुछ ना कुछ तो देख ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो क्रैक कर ही लेंगे. But who am I kidding? Like, I'm way past that age to make it now. But ठीक है, I mean, that's how it is. But I have no regrets whatsoever. I think सीखा ही है कुछ ना कुछ मैंने कहीं ना कहीं से. Oh Good. yeah. Yeah. So, हमारी जो listeners है, they Hmm. they really love productivity और time management related content. So ये question मैं miss कर ही नहीं सकती. अच्छा. Please tell us, how do you manage your time with so many things going around you? Okay. I've gotten this question before, and the only way I answer this is none of the things I love, none of the things I do is something I hate, which Hmm. means that everything I do, I love doing it, whether it's public speaking or Hmm. shooting ads for brands or making content for myself, or now that I've started shooting my podcast and I've not launched it yet as we speak, which is whatever date this is. Maybe by the time this goes, my episode will also go live, right? So the podcast that I'm shooting right now is also happening. So all of the things that I'm doing right now is something I love. Hmm. Even before getting on this podcast call, I was at the gym, which is Okay. why I told you let's do this half an hour later, because I would not be able to come back home. Hmm. So
I think now I've realized that you need to prioritize things you like doing because a time limited है. तो आप सब चीज नहीं कर सकते, तो आपको वही चीज करनी चाहिए जो आपको पसंद है. एंड वन फॉर द किचन, वन फॉर द सोल. सो यू हैव टू मेक दैट डिफरेंस, यू हैव टू मेक दैट बाइफर्केशन कि इससे पैसा आएगा, इससे घर चलेगा, और इससे पैसा नहीं आएगा और नहीं आना भी चाहिए. नॉट एवरी हॉबी नीड्स टू बी मोनेटाइज्ड. लेट हम्म, मी से दिस आउट लाउड. हर हॉबी को मोनेटाइज मत करने जाओ, यू विल लूज द क्राफ्ट. प्लीज. अगर मैं क्रिकेट से मैं पैसा ढूंढूंगा ना, मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा. हम्म, अगर मैं बैडमिंटन, आई ऑल्सो प्ले बैडमिंटन वेरी एक्टिवली, सो इफ आई लीव बैडमिंटन, इफ आई थिंक बैडमिंटन से पैसा कमा कैसे कमाया जाए, आई विल लूज द क्राफ्ट ऑफ बैडमिंटन ऑल टुगेदर. राइट? तो वो छोड़ दो, वो सोचना बंद कर दो. वन फॉर द किचन, वन फॉर द सोल. सोल के लिए क्रिकेट है, बैडमिंटन है, वर्कआउट है, ड्राइव्स है, सब कुछ है. किचन के लिए बहुत कुछ है. एंड ए एज आई मेंशनड, एवरीथिंग आई डू इज समथिंग आई लव डूइंग. हम्म, B, everything is on the calendar. Every single thing is on the calendar. हम्म, Which is why I told you कि a calendar invite भेज दो please. Because yeah, every single thing, I cannot function now without the calendar. See, I always have a diary, pen and paper on the table. Always, always. A notepad and a pen on the table. Always. हम्म, To keep things handy, to keep note things down always. Here and there. कुछ भी idea है, note down कर लिया. Phone Pay, there's a self WhatsApp group. There's a group in which I am the only member, and I've pinned it to the top of my chats. same, So I know कि कोई भी, it's called ideas. So कोई भी idea अगर आए, I note it down in the idea section, yeah, right? And that keeps me going. And things are pre-planned. It's not ad hoc. मतलब and it can't be ad hoc now because things have to be pre-planned. Otherwise काम नहीं हो पाएगा. राइट? किसी को अगर कमिट कर दिया कल शाम को 5 बजे, तो कल शाम को 5 बजे ब्लॉक हो गया. आई हम्म, कांट बैक ऑफ सेइंग अरे मैं भूल गया यार ब्रो, मैं तो सो रहा था. नहीं ब्रो, इट्स नॉट, आई मीन यू आर मैच्योर इनफ नाउ, यू आर वर्किंग, यू आर नॉट इन कॉलेज कि हाँ ठीक है भूल गया छोड़ना. अभी यू आर मैच्योर इनफ दैट यू आर वर्किंग, यू नीड टू बी अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू से. राइट? तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट को लेके ऐसा है कि पहले तो फिल्टर आउट करो कि आपका जो काम, जो छोटा छोटा काम है ना, जो जिसमें लाइक 5 मिनट लगना है, 10 मिनट लगना है, उसको फटाफट निपटाओ. हम्म, बिकॉज progress gives you confidence, yeah, right? So you have like 10 days written in your notepad, right, for tomorrow. अगर 10 मिनट ही लगना है, आज ही खत्म करो ना यार. So हम्म, tomorrow you have like 9 days, 9 things to do, yeah, right? So the task that is less time taking, finish that off first. So your progress बार में तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो, and that gives you confidence कि हाँ यार चलो ठीक है, कुछ तो काम हो गया already. So start off with those tasks. Second, there's a difference between urgent and important, हम्म, right? It's called the quadrant, yeah, there's a there's a term for it. It's called the Eisenhower या Eisendorf, पता नहीं कुछ तो एक Eisenhower matrix बोलते हैं उसको, पता नहीं, which is urgent and important. तो वो quadrant याद रखो कि एक तो होता है important है but urgent नहीं. Urgency means time bound. तो हम्म, if it is time bound, then prioritize that task because time bound है. अभी होना जरूरी तो अभी होना जरूरी है. राइट? उसके बाद नहीं हो पाएगा. इफ इट इज इंपॉर्टेंट, गेट इट डन. लेकिन अगर अर्जेंट है तो वो पहले खत्म करो. सो हम्म, सर्टन थिंग्स, अगेन पोमोडोरो टेक्निक है कि यार आई कांट सिट एट वन प्लेस एंड वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, मेरे से नहीं होता. which is why I sit here for a while, then go out, maybe get my bottle of water, right? Just go out for like 5-10 minutes का घर पे वॉक करके वापस आके बैठिए. हम्म, तो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो गया. यू नीड दैट ऑफ स्क्रीन टाइम ऑल्सो, yeah, राइट? नेक्स्ट, keep things clean around you, हम्म, right? Your cleanliness will also ensure that you have a clean mind, right? yeah, yeah, um, Declutter your mind, which is why my space here is very decluttered. There's nothing that I don't require at this point in time. मतलब हम्म, अगर नोटपैड है तो है, वो चाहिए तो चाहिए, बॉटल है तो चाहिए तो चाहिए. One more thing to add here is keep greenery around you, right? हम्म, Plants, or maybe like a chota sa plant or something greenery around you, because greenery gives you that confidence to work. It's a feel right, good factor. If you're working out of home, make sure you're wearing proper outfit,
and not sitting in your shorts and your pajamas, because you'll always feel as if you're at home and not working. Wear those tracks, wear those jeans, and work from home, even if you're working from home, because then you'll not feel like lenga only, Yeah. right? It'll give you that mood कि हाँ यार अब काम होगा, right? तो यही सब चीजें हैं, आई थिंक सिंपल चीजें हैं, बट आई थिंक मतलब लिटिल थिंग्स ह्यूज इम्पैक्ट वाला हिसाब किताब है. तो आई थिंक आई कीप वेरी थिंग्स वेरी क्लीन. आई वुडंट से I have OCD. OCD is a huge term. I don't want to put myself in that bracket, but I think I'm very fussy about cleanliness. So I think I need things to be in order. Yeah. Hmm. Even if ये ऐसे है ना, I would want to make it ऐसे. मतलब ये है, like Like I'm a little fussy like that like way. when you do a squat in the gym, तो वो जो स्क्वायर है, फ्लैट लगा हुआ, हाँ, दोनों पैर उस लाइन के ऊपर होना करेक्ट चाहिए. आई हैव द करेक्ट सेम थिंग. करेक्ट 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 करेक्ट. तो वो है, मतलब आई कांट, लाइक अगर रग के ऊपर टेबल रखा हुआ है, हम्म. सो द टेबल कांट बी केप्ट टेढ़ा यार. मतलब इट जस्ट अर्क्स मी टू सी कि एक टेढ़ा रखा हुआ है, इसको ठीक करो यार. या या मतलब अगर नोटपैड ऐसे है तो ऐसे रखा हुआ है, नहीं मेरे को नहीं जम रहा यार, मतलब उसको इट हैज टू बी केप्ट प्रॉपर्ली. तो या कितना इट्स सो सूदिंग टू सी थिंग्स इन प्रॉपर, लाइक इन ऑर्डर. तो आई हैव लाइक अ बिट ऑफ अ फसी कि हाँ ठीक है, ठीक से रखते हैं. But I think that helps me because it helps me declutter. And when I see things around me, when I see things clean around me, it automatically sort of helps me be much more productive in life. you don't want chaos around you. Yeah, I don't want chaos around you. There's one more thing that I feel that helps me, you know, maintain my mental sanctity. I don't want chaos. I'm a Hmm. very peace loving person. मेरे को शांति बहुत पसंद है, बहुत Hmm. पसंद है. मतलब मैं बैठा रहूंगा, मेरे को कोई मतलब, and which doesn't mean that I don't like parties. Yeah, of course I like parties. I like going to club. I like going to clubs. I like dancing once in a while. But It's you fine. like to spend some time alone also. Yeah. I have the best time when I'm alone. Same. And I मतलब मेरे को शांति बहुत पसंद है यार. मतलब I don't, और मेरे को ना unnecessary झगड़ा लाइफ में, लोड, Hmm. प्रेशर, chaos नहीं चाहिए यार. मतलब तुम chaos क्रिएट कर रहे हो मेरी लाइफ में, तुम like get out. मतलब and I'm okay. मतलब Yeah. I was shooting a podcast with somebody the other day, and she happened to mention something really interesting which stays with me right till now. She said, I've cancelled my friendship subscription with 3 of my friends. And I was like, this is interesting. Friendship subscription bhi hota hai. She said, yeah, you subscribe to the friend. Yeah. So you I've cancelled those subscriptions because they were becoming toxic for me, and I didn't Hmm. realize Hmm. it early on, and I felt that मतलब मेरे लिए productive नहीं है. So I was like, chuck it, which is a great way to think about it, right? So Yeah. मेरे को यार लाइफ में बहुत शांति चाहिए, and it's all about now that you're 25, 27, 28 years old, you realize that it's now about adult friendships, where life has changed now, right? Yeah. You are on the other side of the spectrum now, where now you are busy, you are making money, you know, you are hustling, you want to get things done, you want to get ahead of the career graph for Right. yourself, not for anybody else. मेरे को नहीं फर्क पड़ता लोग कहाँ हैं, नहीं है, मेरे को मतलब इट्स जस्ट फॉर योर सेल्फ कि यार Yeah. हाँ ठीक है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है. Hmm. So it's for yourself, and you're doing a bunch of other things. So now I think it's about adult friendships. And if you don't understand where I'm at, if you don't understand ki bhaiya, this is what I'm going through, or this is even me, if I don't understand what the other person is going through, you should cut off with me for sure. Yeah. Yeah. So I think adult friendships is about understanding that this is something that you want out of life, and you need to respect that space Hmm. for the person. If that doesn't happen, then I don't think it's worth even explaining to the person कि भैया तुम ये करो. नहीं यार, तुम्हें समझ जाना चाहिए. अब तुम मेरे को जानते हो एज अ पर्सन कि मैं कैसा हो क्या हो. आई नो यू एज अ पर्सन कि तुम कैसे हो क्या हो. व्हाई आर वी बीइंग फसी अबाउट इट, लाइक व्हाई आर वी बीइंग सो chaotic अबाउट इट. ठीक है ना, मतलब लेट्स जस्ट बी हाउ इट इज. तो आई डोंट लाइक chaos in life. I like simplicity, I like clarity in life, and I like peace in life. को शांति चाहिए. A lot of people say I'm old school, so be it.
को मतलब नहीं उससे. I'm happy being old school as long as this is okay. I'm happy Yeah. being old school. Yeah. Uh, Deepak, how do you want Deepak to be remembered? Well, it's a good question. I've thought about it as I mentioned. मतलब मैंने सोच I keep thinking about it कि what should be my legacy. Keep thinking about it, but I think the only thing is people should remember कि यार था एक बंदा उसने अपना काम किया काम करके निकल गया and he has set a benchmark. Hmm. ठीक है और तुम्हें बीट करना करो नहीं करना है मत करो दैट्स योर प्रेरोगेटिव बट ही हैज सेट द बेंचमार्क और मेरी कहानी जाने बिना मेरे को जज मत कर राइट नो माई स्टोरी एंड देन जज मी वेयर आई एम एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट I think I would want to be known as somebody who did not give up. Gave up on things that were not important. So, of course, gave up on those things, but did not give up on a lot of things, Hmm. considering times were tough Hmm. and not afraid of the start Hmm. and spoke to other people and inspired them to start their journeys. Like a lot of people now around me tell me that, भाई तुमने तो शुरू करवा दिया मेरा ये. Yeah. So I think ये सुन के बहुत अच्छा लगता है. हाँ ये सुन के because I've been there Hmm. and कहीं ना कहीं किसी ने मेरे को ये बात बोली थी कि तुम शुरू करो जो होगा देखा जाएगा which is why I now say start now figure out later. Yeah. स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिगर आउट होगा ही नहीं भाई तो मतलब आई थिंक and when I hear people say that oh you're so ambitious or you're so positive or ये वो है ना देना एक तो it's a feel good factor but I think Hmm. more than hearing this I think once you start things after hearing me I think that's the greatest sense of validation and Hmm. I've gotten things from people where they've said that you know उनसे बात करके मजा आया यार मतलब एक तो होता है एनर्जी एंड Yeah. एनर्जी रब्स ऑफ राइट गुड और बैड पॉजिटिव और नेगेटिव इट रब्स ऑफ Yeah. 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 so लोग I have heard this that even if this in fact the other person I was at the gym yesterday and I was speaking to my friends after the workout so we were all standing there were like a bunch of 5 6 people and there was this girl who was a friend of mine who told me that you know Deepak तू तो बड़ा ट्राई कर रहा है ये वो मैं कहा कि मैं किसी पे ट्राई नहीं कर रहा भाई मैं ट्राई कर रहा था मैं तेरे को बताया था तू सेट करवा देती मेरे को किसी से मैं किसी पे ट्राई नहीं कर रहा पहली बात तो ये एंड देन शी ओनली मेंशन शी सेड तो अगर बात करता भी ना तो लगता नहीं कि तू खुशी हो रहा है कि तू चेप हो रहा है Hmm. मैं मतलब मैं हो ही नहीं रहा भाई मैं एकदम नॉर्मली बात कर रहा हूँ एज इफ आई एम गेटिंग टू नो द पर्सन इट्स लाइक अ Yeah. वेरी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन सो Hmm. आई हैव गॉटन दैट where I think people feel good when they have a conversation um, and yeah I think I just want to spread smiles यार मतलब मेरे को हंसाना है that's the kick I get out Hmm. of life. Like I think I'm very funny in my head, and I feel that when I make people laugh, when I make people laugh, when I'm in a room and I'm making people laugh and people are laughing, and I'm the reason for it. I think that's. मतलब if I were to summarize the entire answer, I would say कि अगर दीपक रूम में नहीं है तो रूम में हंसी नहीं है. I वाह. think I think that is probably the legacy I would want to leave behind. बाकी धंधा वंदा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है. That's beautiful. So yeah, मतलब वो मतलब me and a couple of my friends who sit together and once in a while talk Hmm. about life and get very philosophical at times. Uh, you know, both of us or three of us, you know, when we sit, uh, we always say this, we always emphasize on this one thing that भैया यही तो कमाए हैं लोग कमाए हैं लाइफ Hmm. पैसे वैसे सब ठीक है यार वो सो मतलब आज है कल नहीं है आज नहीं है Hmm. कल है वो तो Hmm. इट्स एवर फ्लक्चुएटिंग Yeah. बट आई थिंक लोग कमाए एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट Right. तो ये आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु थिंक देव मेड इट
And I know I come across people who think they've made it and their behavior suddenly changes. Ki, Hmm. oh, I've made it, I have this inflated ego and I've have this inflated attitude in me ki अरे यार है तू कौन है दीपक निकल यहाँ से. You're not gonna मतलब that will take you nowhere. Have you? Humility and kindness will take you places that I don't think anything else can. Anyway, yeah. Have I Yeah. what? Have you found your why? Have I found my why? Uh, these are good questions, and these are questions I think about on a daily basis. Like this is not something that I think today or answer आ गया. Like I keep figuring out कि यार हाँ ये है वो है. Um, there's not a concrete answer to finding my why right now. But I think whatever I do, as I mentioned, one for the kitchen, one for the soul, and I don't have a definite why. कि मैं ये Hmm. कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ. There are different reasons to things that I do differently, right? Whether it's content, तो content का different why है, धंधा का different why है, क्रिकेट का different why है, बैडमिंटन का different why है, वर्कआउट का different why है, friendships का different why है. If you're chilling with friends, that's also a different why. Why would you want to chill with friends? A, because I want to chill with the person. बहुत time हो गया मिले बात किए तो I want to meet the person. But if I don't want to meet, if I feel that the energy of the person is not right, even though I have time, I would say no. Yeah. Because I was like, यार ये दिन भर सिर्फ रोता रहता है, दिन भर सिर्फ लोगों को pull down करता है. I'm not my vibe. So I would Hmm. say no. So I think I'm figuring out there's not a definite why. I think Hmm. why सबका अलग अलग है. But again, I am also sort of like, Finding out, still figuring it. yeah, still Yeah. figuring. Yeah. और वो फिगर आउट खत्म ही नहीं होता यार. मतलब इट्स गोना स्टे टिल योर लास्ट ब्रेथ कि मैं क्यों Hmm. कर रहा हूँ ये. Yeah. मतलब मैं I could easily be doing something else altogether. I could be doing a job. I could not be running a business right now. I could choose to not live a public life where I'm out there on the internet every single day. I could very well live a very private life and दुनिया से कुछ भी इधर से उधर टस से मस भी नहीं होगा. Hmm. Right? But Yeah. but it's a choice. Yeah. Circumstances have happened. It's a choice that I've Hmm. taken, and right now I'm happy with it. Yeah. So it's very important to keep going. और Hmm. मतलब मेरे को पापा लोग भी यही बोलते हैं यार. मतलब my parents also say this very simple thing कि तुम स्ट्रेस मत लिया करो यार. Hmm. तुम्हारा ना लाइफ में एक तो भगवान ने तुम्हें बहुत बढ़िया चेहरा दिया है. मैं बोला चलो ये तो दिस तो आई एग्री. देन दे से कि एक तो तुम्हारा चेहरे पे दिख जाता है तुम ना Hmm. बहुत ही घटिया एक्टर हो. तुम्हारे तुमसे एक्टिंग एक्टिंग होती नहीं है. तो तुम्हारे चेहरे पे दिख जाता है इफ यू आर स्ट्रेस्ड आउट. सो Hmm. सो यू नीड टू बी एवर चेयरफुल एंड थिंग्स विल टेक टाइम इररिस्पेक्टिव चाहे वो आज हो कल हो परसों हो. चीजें होने में फ्रुक्टिफाई होने में टाइम लगेगा. बट ये सब चीज को लेकर चिंता मत कर कि अरे यार ये नहीं हुआ क्या होगा क्या होगा. अरे वो हो जाएगा. तो Uh, हमारे बजरंग बली है वो हमारे साथ है. हमारा नैया तो पार लगना ही लगना है फॉर श्योर. एनीवे या यू वर सेइंग समथिंग. yeah, I was saying कि अभी स्पेशली अभी नहीं, आई थिंक दिस इज अ जनरल क्वेश्चन जो हमेशा से ही सबके मन में था. पीपल आर रियली थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, या हम्म. जैसे वाई बोला अभी वही चीज. सो हम्म. डू यू थिंक जरूरी है पर्पस होना कुछ? ये जरूरी है कि सबका वो ढूंढना जरूरी है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ? इस सवाल का जवाब सबको ढूंढना जरूरी है? अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. एंड अगेन टू ईच इज ओन. या. मतलब यार एक तो ऐसा है ना कि हम बड़े सोशल स्ट्राटा को मेंटेन करने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं. तो अभी सोशली सब वो बात करते हैं कि अरे यार व्हाट इज योर व्हाई व्हाट इज योर पर्पस. तो हम भी पूछ रहे हैं और ये हम्म. बहुत ही सुपरफिशियल होता है. मतलब लोग बात करते हैं सुपर कि हाँ ठीक है व्हाट इज योर व्हाई व्हाट इज योर व्हाई व्हाट इज योर व्हाई. बट इन एसेंस लोगों को रियल इन डेप्थ आंसर चाहिए ही नहीं. अगर लोगों को इन डेप्थ आंसर चाहिए तो पीपल वुड गो इन दैट डेप्थ टू फाइंड आउट दोस आंसर्स. बट लोग जाते ही नहीं है. पीपल स्टे वेरी सुपरफिशियल दैट वे. So I think
मतलब टू ईच देयर ओन यार, जिसको खोजना है वो खोज रहा है, जिसको नहीं खोजना वो नहीं खोज रहा है, जो नहीं खोज पाया वो क्वेश्चन कर रहा है कि खोजना जरूरी भी है कि नहीं, कि हम क्यों इतना टाइम हम्म वेस्ट कर रहे हैं। जिसने खोज लिया है वो वापस इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि यार हमने खोज लिया पर ये सही में मेरा भाई है क्या, हम कुछ और भी तो कर सकते हैं। सो व्हाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, राइट। मतलब if money is the only criteria, then I could be very well be doing something else and making money. या So clearly money is not the only criteria, right? If I like what I'm doing, बहुत सारी चीजें हैं जिस जो मेरे को पसंद है, but I don't want to monetize. Like I mentioned, like a lot of hobbies, so not every hobby needs to be monetized, या right? या If I'm reading a book, does हम्म not mean that I want to write a book in future. No, मतलब जरूरी नहीं है, मैं बस पढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ना पसंद है, खत्म। अगर मैं ये पीछे जो बीन बैग पड़ा है इस पे बैठ के अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ या कोई पॉडकास्ट पढ़ सुन रहा हूँ, डजंट मीन आई वांट टू बिकम अ पॉडकास्टर, राइट? वो मेरा शौक है, मेरे को मन है यार करने का। इफ आई वांट टू गो ऑन ड्राइव्स, डजंट मीन आई वांट टू बिकम एन F1 रेसर, राइट? सो नॉट एवरीथिंग इज डन विद अ मोटिव ऑफ कन्वर्टिंग दैट इनटू अ प्रोफेशन, राइट? जरूरी नहीं है, मतलब टू ईच देयर ओन, जिसको जो ठीक लगे यार। आई थिंक मतलब आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन वेरी होलिस्टिकली, या या बट टू ईच देयर ओन। बहुत लोग फिगर आउट कर रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है कि उन्होंने फिगर आउट कर लिया है। इट इज दिस इज जस्ट लाइक फाइंडिंग द प्रोडक्ट मार्केट फिट इन अ स्टार्टअप इकोसिस्टम, हम्म जहां पे लोगों को लगता है मैंने मैंने फोड़ दिया है, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि तो प्रॉब्लम था ही नहीं। मैंने हम्म क्या सॉल्व किया? मैंने कुछ सॉल्व ही नहीं किया, बिकॉज हम्म प्रॉब्लम था ही नहीं। तो मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ? मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। सो आई थिंक इट्स दैट एनालॉजी दैट आई लाइक टू गिव हियर, कि मतलब इट्स लाइक फाइंडिंग द PMF, प्रोडक्ट हम्म मार्केट फिट आप फाइंड कर रहे हो, बट इवेंचुअली था ही नहीं ना, मतलब प्रॉब्लम या ही नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस, तो तुम किसका सोल्यूशन निकाल रहे हो? हम्म तो आई थिंक टू ईच देयर ओन, जिसको जो ठीक लगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एवरीबडी इज फिगरिंग आउट, और एवरीबडी सबके लाइफ में भसड़ है। हम्म कोई कोई ये कर रहा है, कोई या वो कर रहा है। दूर से ना बहुत सुहाना लगता है, दूर से everybody बड़ा। is messed up actually. हाँ मतलब दूर से, क्योंकि हम बात ही सुपरफिशियली कर रहे हैं ना, हम Agree. बात ही जर्नीज के बारे में कर रहे हैं, इसके बारे में कर रहे हैं, तो हम डेप्थ में नहीं जा रहे। जब हम डेप्थ में जाएंगे तो हम समझ में आएगा कि यार एंड सबके साथ डेप्थ में जा भी नहीं सकते, Yeah, राइट? आई yeah, आई डोंट agree. वांट टू ओवर शेयर विद एवरी रैंडम पर्सन Agreement. ऑन द इंटरनेट। Absolutely. मेरे को नहीं अपने कहानी के बारे में सबको बतानी है. मेरी ऑडियंस को बताना नहीं, बताना मेरे, वो मेरे लिए यार, मेरे और मेरे दो चार दोस्त के लिए जो 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 सुनेंगे। मेरे Right. सब दोस्त के लिए भी नहीं है वो, मेरे दो चार दोस्त के लिए जो सुनेंगे, who will lend a Hmm. ear to my Yeah, problems and my stories, और मेरी दुख दर्द पीड़ा सुनेंगे कि हाँ भैया दीपक को सुन लेते हैं। क्यों सुन yeah, लेते हैं? क्या yeah, पड़ा है उनको? बट आई थिंक सब फिगर आउट कर रहे हैं इवेंचुअली। yeah, yeah. सदगुरु इस बात पे बहुत एक अच्छा चीज बोले थे बिकॉज ही गेट्स दिस क्वेश्चन अ लॉट कि हमें अपना पर्पस कैसे ढूंढूं. या ट्रू। Yeah, so he said that people are so much eager to find a new purpose. जबकि दैट already कितना कुछ messed up है इस दुनिया में. You can fix so many things. If you इज just ट्रू। go out of your home, you will see so many problems everywhere. Just choose any one problem and try to fix that, make that your purpose. कि मैं इसको ठीक करूंगा. Why do you have to keep finding a new purpose which actually made sense I to me? think whatever I think not all problems would be your problems. I think Yeah. uh, the problem has to resonate with you, Mm. which is why a lot of these startup founders Yeah. build products when they've faced the problem themselves, Themselves. Yeah. right? Not because they saw it as a problem, as a worldwide problem, or bana diya. A Mm. lot of people have built big people have built startups because they faced the problem themselves firsthand. Mm. Matlab, if you read Uber ka kahani, Travis Yeah. Kalanick was out on a rainy night in Paris, couldn't find a cab back to his hotel. Mm. That's when he thought कि यार फोन से बुक करना चाहिए ना ऐप। मैं क्रेजी Mm. हो जाएगा ब्रो अगर फोन से आप बुक कर देंगे और गाड़ी तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी 5 मिनट। What a cool technology you're working in, right? मतलब so I think the woman Whitney Wolf, who was the founder of Bumble, is the probably the youngest millionaire of the US, Yeah. who was kicked out of Tinder. She was working at Tinder. It's a very interesting story, right? She was working Oh. at Tinder. She was kicked out of Tinder, and then she thought कि नहीं यार ये problem तो solve हुआ नहीं है. I would take it on myself to
solve the problem, and then she found Bumble, Wow. where she realized that the woman should make the first move. Mm. Guys should not make the first move, because then it might happen that the chances of creepiness or harassment could Mm. rise. But if the woman is making the first move, the chances of creepiness or harassment is much, much lesser than the opposite scenario. So if the woman Okay. makes the first, that's why women make the first move on Bumble. I didn't know that. Yeah, women make the first move. The guy cannot make the first move. The guy cannot initiate a conversation. Okay. Women make the first move on Bumble. It's on the thesis that if the woman wants to take it ahead, she would want to take it ahead. Hmm. It's her call. It's her prerogative. If she wants to take it ahead, she would take it ahead. If not, then the conversation doesn't begin. Yeah, that's nice. So I think it's just problems stemming from their own set of problems around them. Hmm. And I think that's when they realize that okay, this is something that needs to be done, and let's solve this problem. So यही यही है यार, मतलब purpose. So yeah, it's an ever evolving issue where you realize कि हो now I have cracked the purpose. नहीं यार, वो मतलब वो crack नहीं होता कभी, वो you're always figuring out. Thinking about it. Yeah, to हाँ, figure it out. so it's a recurring thought in your head कि मैं क्यों कर रहा हूँ यार ये, मतलब पैसा could be for somebody, fame could be for somebody, success Hmm. could be for somebody, happiness could be for somebody. तो मतलब Yeah. to each their own again. Okay. Another very cliche question, but uh, ये बहुत हेल्प करता है लोगों को. One book recommendation from you, I which have a lot. I have a lot. I am my okay. Shoe dog तो पढ़ ही लेना for sure. मतलब shoe dog तो छोड़ना ही मत. Irrespective of whether you like Nike or not, Shoe Dog is the story of Nike. Just to be very clear, hmm. Shoe Dog is written by Bill Bauman and Phil Knight. तो वो तो पढ़ ही लेना बिना मतलब छोड़े, इस हफ्ते में you because are the second person who have said me to read Shudong. पढ़ लेना, वो छोड़ना भी मत. मतलब अगर मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता शू डॉग के बारे में, आई वुड हैव बीन अ मिलियनेयर बाय नाउ. मैंने बेच दिया है, मैंने बुक इतना ज्यादा, मैंने बोला भाई हाँ ये तो पढ़ ही लो फॉर श्योर, हाँ. ये तो हम्म. छोड़ना ही मत. सो हम्म. शू डॉग इज वन बुक दैट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, धंधा, नाइकी, ये वो, मतलब नहीं है. बुक मजा आना ही आना है फॉर श्योर. इट्स हम्म. अ थिक बुक, मतलब आई डोंट हैव इट हियर, बट इट्स अ थिक बुक. Yeah, I've seen it. It's a thick book. या, Yeah. but you should read it. So Shoe Dog is one book. The other book is The Hard Thing About Hard Things. It's about how businesses are built. Okay. It's a very, very, very interesting book. Um, then we have How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Yeah, yeah. Very, very, very interesting book. One more book is the one that I read a couple of months back, which is Why Men Don't Listen and Women Can't Read Maps. Okay. Please go ahead and pick up that book. Men Are From Mars and Women Are From Venus. Yeah. ये भी एक book है. Talks a lot about men versus women psychology. How Mm. men behave in a certain way, how women behave in a certain way. Mm. And it's a very, very interesting read. मतलब मेरे को तो बहुत चीजें पता चली यार. Which is very interesting. So, couple of these books. कोलकाता छोड़ के मुंबई चले गए आप. हाउ इज हाँ जी. मुंबई ट्रीटिंग यू? You're in Calcutta only? या या या. अच्छा. हाँ यार, मतलब मैं बॉम्बे आ गया. मैं यूके से आया था लास्ट ईयर अगस्त में, और उसके बाद से फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया. और मतलब सही है यार बॉम्बे, मतलब काफी वाइब सही है. हम्म. हर सिटी ना, सो आई रियलाइज्ड दैट now that I've traveled a couple of cities here and there, I've realized that either या तो वो सिटी पुल करती है या पुश करती है. कैलकाटा ना पुल करती है नीचे, मतलब एटलीस्ट फॉर द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम इन. कैलकाटा ना लोगों को पुल करती है नीचे कि तुम कैसे कमा रहे हो इतना पैसा यार, तुम्हें तो नहीं कमाना चाहिए, हम नहीं कमा रहे तो तुम भी नहीं कमाओगे. बॉम्बे पुश करता है. बॉम्बे बोलता है नहीं यार, क्योंकि बॉम्बे में किसी को किसी से मतलब नहीं है. तो तुम अल्टीमेटली यू सी द पुश. यू आर लाइक हाँ ठीक है, वो कमा रहा होगा 5 करोड़, वो मतलब नहीं है. आई एम मेकिंग 10 यार, आई डोंट गिव, लाइक आई डोंट केयर, मेरे को मतलब ही नहीं है. So I think Bombay has a vibe, is a very growth mindset, growth oriented city है. Very driven city that way, very fast paced. मतलब
and I've heard from a lot of people who have come to this city, they've said that या तो तुम 6 महीने में वापस चले जाओगे, और या तो तुम ये शहर छोड़ के जाओगे ही नहीं। तो ये ऐसा सिटी है, मतलब तुमको 6 महीने में, 1 साल में समझ में आ जाएगा कि ये सिटी तुम्हारे लिए है कि। सो या तो तुम 6 महीने में वापस चले जाओगे जहां से तुम आए थे, और या तो तुम इस सिटी छोड़ के जाना नहीं चाहते वापस। सो मतलब सही है यार, बॉम्बे मेरे को अच्छा लगता है, अभी तक तो मजा आ रहा है। एंड इट्स नॉट बिन अ लॉन्ग टाइम, मतलब मेरे को अगस्त में आया था मैं, सो 7 8 8 महीने हुए। हम्म। एंड ठीक है, फाइनली आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम हैविंग अ गुड टाइम हियर, मजा आ रहा है। नाइस। या ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन दीपक। हाँ जी। uh, when things are not working out your way, or हम्म। if something fails, बहुत मेहनत किया उसके पीछे में, and if something is failing, it's very common कि खराब तो लगेगा, बुरा तो 100%। लगेगा, you will feel bad. So what do you do to come out of that feeling and that phase? From the time I've started creating content and started putting myself out on the internet, और सबसे बढ़िया बात कंटेंट को लेके ये हुई है कि मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूँ लाइफ। Hmm. राइट, इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू मीट सो मेनी इंटरेस्टिंग लाइक माइंडेड पीपल दैट यू वुड अदरवाइज वुड नॉट हैव मेट फॉर श्योर। Yeah. ठीक है। नाउ I've become this eternally optimistic person that uh, I know I will make it happen no matter what. सेकंड ये है कि अगर मान लो मैंने मेहनत करी और वो नहीं चला, या बहुत बुरी तरह फेल हो गया, एक तो मैं इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार ठीक है, मतलब नहीं चला, नहीं चला, ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना है। राइट, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है हर बार। आई हैव तो रियलाइज विथ मी, जितनी बार आई हैव टेकन डिसीजंस इन हेस्ट, it's turned out to be not so good for me. So, Hmm. I've sort of taken a step back and realized कि यार ठीक है, ये गलती हुई है मेरे से और मेरे को ये नहीं करना है। Hmm. Second, I'm a very मतलब religious in the sense that मेरा एक blind faith है। uh, मतलब आई बिलीव इन हनुमान हनुमान जी। तो मेरा ये एक ब्लाइंड फेथ हनुमान जी पे ये है कि कोई बात नहीं, चीजें नहीं चली, अभी तो नहीं चली, बट थिंग्स विल गेट बेटर फॉर श्योर। He must have और planned something for you. That is why this didn't work out. या मस्ट हैव प्लान दिस। और वो ना मतलब राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज born till right now to about how much ever years I live, Hmm. everything is planned, everything is destiny, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसने लिख दिया है। Yeah. ठीक है, ये हाथ की लकीर है ना, उसने लिख दिया है कि लो भैया तुम्हारा ये जीवन है, जाओ जियो अपनी जिंदगी। Hmm. राइट, तो आई थिंक ही इज रिटन दैट फॉर मी और एंड फॉर एवरीबडी एल्स। Yeah. तो आई थिंक अमिताभ बच्चन जी, आई थिंक दिस ही सेज दिस वन लाइन कि खुद का मन हो तो अच्छा, खुद का मन का हो तो अच्छा, खुद का मन का ना हो तो और भी अच्छा, अब भी अच्छा। क्योंकि वो ऊपर वाले के मन का हो रहा है और ऊपर वाला कभी हाँ, तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। बुरा नहीं जाएगा। वाह, सो वेरी नाइस। या। I think there is always um, a motive हम्म। behind things happening, even if that thing is bad in the short term. हम्म। राइट, वो एक रीजन की वजह से ही होता है यार। एंड आई रियलाइज दैट अगर नहीं चले, नहीं चला तो खराब तो लगता है, फॉर श्योर खराब लगता है। मतलब अभी कुछ भी आप कर रहे हो नहीं चलेगा, इतना मेहनत कर रहे हो, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर नहीं चलेगा तो खराब लगेगा, ऑब्वियसली खराब लगेगा। But I think I always go back to the basics here, which is go back to Hanumanji and just sit with my parents, just like discuss कि क्या चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। And I think he's planned this. हम्म। And मतलब मेरा ना ब्लाइंड फेथ है, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे साथ तो नहीं हो सकता यार पूरा, मेरे को हम्म। पता है। मतलब अब मैं एकदम, मैंने तो मतलब आई एम निर्भर ऑन हिम कि भैया ठीक है, आपने कर दिया ना प्लान। हाँ। और मैं तो कई बार कंप्लेन भी करता हूँ, मैं बोला यार आपने ये करवा दिया, मैं इतना आपके आपके साथ रहता हूँ हर बार, और आपको अपने पास रखता हूँ, और आपने ये कैसे करवा दिया मेरे साथ, ये तो गड़बड़, ये तो चीटिंग कर रहे हो आप मेरे साथ, हम ये गेम साथ में खेल रहे हैं, आप चीटिंग कर रहे हो।
तो आई थिंक मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आई थिंक यू डोंट शेयर एवरीवेयर, बट आई थिंक कपल ऑफ थिंग्स दैट यू डू ऑन अ डेली बेसिस इज व्हाट keeps you going. So Yeah, I think I fall back to basics. वही, yeah. you sit, spend time with yourself, um, spend time with your family. Now for some it could be their better halves, or for some it could be their friends or their family or whoever that is. But I think you fall back to your people. But I So guess that having faith in some bigger power, आप भगवान जी बोल दो, spiritual meditation, whatever uh, you pray, but it really helps, and we should have faith in some superior power which is taking care of us. I would totally agree with. yeah, 100%, 100%. मतलब यार, so I've had this discussion with a very close friend of mine, and she says that I'm not religious per se, right? Which is absolutely okay. But I think I've told her that I have found a lot of positivity and a lot of things have worked out because I've been faithful to one God. And everybody has a favorite here, right? Yeah. मतलब कोई ऐसे जनरली कोई प्रे नहीं करता सारे भगवान, Hmm. राइट? वो एक एक ना एक भगवान को ही तुम सोच के प्रे करते हो कि हाँ यार, आई लाइक गणपति, और आई लाइक तो शिव अपने शिव आप को जी, एक और कनेक्शन होता है, एंड दैट इज वेरी स्पेशल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. correct. So so Yeah. so you so you so you pray to that person, and then you figure out and do a bunch of things. But I think ओवरऑल आप रियलाइज करते हो कि हाँ यार, मतलब एक हायर पावर, एक हायर स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करना जरूरी है, Hmm. बिकॉज ही इज द वन हु इज राइटिंग द स्क्रिप्ट. Yeah. सो हाउ कैन यू नेगेट द क्रिएटर? मतलब आप क्रिएटर को कैसे हटा रहे हो यार? उसने तो कहानी लिखी है, तुम कहानी क्या बना लोगे उसके बिना? Hmm. मतलब ये मेरा मेरा थीसिस है, मेरा पर्सनल बिलीफ है. हो सकता है लोगों का बिलीफ सिस्टम अलग हो, लोगों का थॉट प्रोसेस अलग हो, वो अलग स्टोरी है. बट आई थिंक दिस इज जस्ट माई सॉर्ट ऑफ फिलोसफी. तो या बट दैट वर्क्स फॉर मी. चलो दीपक, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. 2 घंटा ले लिया मैंने आपका. नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. आई हैड अ लॉट ऑफ फन. थैंक यू सो मच फॉर एवरी हैविंग मिनट मी. वाज एब्सोल्युटली वर्थ इट. मजा आया आपको? आप बहुत सच मजा सच आया. बताओ. सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इट वाज वेरी इंसाइटफुल. बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे लाइक आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम हैप्पी टू हियर दैट, एंड मेरे को बहुत मजा आया जेन्युइनली. लाइक यू आस्क्ड, मतलब आपने जो कुछ कुछ क्वेश्चंस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आई हैव आंसर्ड दोस क्वेश्चंस बिफोर. आई डोंट वांट टू फैब्रिकेट यू विद अ लॉट ऑफ ऐसा फ्लफ फ्लफ के साथ फैब्रिकेट नहीं करना है, बिकॉज यू आर आल्सो इनटू पॉडकास्टिंग, आई एम आल्सो इनटू पॉडकास्टिंग. So we want real feedback. So one feedback is ki some questions I've already answered. So in your next episodes, you could use this as a feedback. But some questions, it really made me think. Like वो जो पर्पस है, you found your why, और मतलब ये सब क्वेश्चंस थे ना मेरे को. आई जनरली लाइक, और इज मेकिंग मनी डिफिकल्ट? मतलब these questions you don't think on a daily basis, but when you think it, you take a while to answer. या. So I think those questions are pretty solid in terms of a thought process. मजा आया, और generally बहुत मजा आया. मतलब I didn't know you are from Calcutta. This is a good connection. I didn't know you are from Calcutta. वी आर डेफिनेटली मीटिंग व्हेन यू कम हियर दिस टाइम. For sure, for sure. मैं आता हूँ. I think I'll be there. अभी क्या अप्रैल, mid May में मैं probably I'll be there. So I'll hit you up whenever I'm there. विल So कनेक्ट. yeah, we should catch up in Calcutta. Have some good chai in एब्सोल्युटली. Calcutta. Yeah. But thank you so much for having me. I had a lot of fun, and to the listeners, if they enjoyed it, बस comment कर देना, बढ़िया. और क्या? You'll find Deepak's all the handles and links in the description or the detail box. You can check it out there. Thank you, Deepak, so much for coming.